about you? आपने बारे में पूछ रहा था. You alright? I was asking about you, it's not. Battle, right? No one said it was going to be easy. किसी ने नहीं कहा था ये इतना आसान I होगा. don't want to fight. Hare Krishna. Thank you. Welcome back, my friend. स्वागत है आपका मेरे मित्र. Hare Krishna. I'm always surprised when people come back. मैं हमेशा चौंक जाता हूँ जब लोग वापस आते हैं. Pleasantly surprised. खुश तौर पे आश्चर्यचकित होता हूँ. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Let us chant. चलिए थोड़ा कीर्तन करते हैं. We're Hare Krishna devotees, right? हम हरे कृष्ण भक्त हैं. Did you come here to get Krishna or to improve your karma? क्या आप यहाँ कृष्ण को पाने के लिए आए हैं या अपने कर्म को बेहतर बनाने के लिए आए हैं? You came for bhakti आप भक्ति के लिए आए हैं or money? या पैसे के लिए? Which one? किसके लिए? Bhakti, okay. Just checking. बस मैं चेक कर रहा था. Hare Krishna. Here, take this garland. Here, take this big one. You're stronger than me, you can carry that. Don't get puffed up though. अहंकार में मत आना. He'll start giving the class and expect me to translate, you know? ये सोचेगा अब ये क्लास देगा और मैं ये गुरुदेव अनुवाद करेंगे. You get carried away, you know? थोड़ा भटक जाएगा. Shishu Gunitai, Srila Prabhupada, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande, Namo Vishnupadaya, Krishna-katha Hari-katha, Srimate Govinda, Swami
kṛta-kṛtyaś Śrīmad Gaur Govinda Swami Śrīla Gurudeva ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharis Śrīmad His Divine Grace Śrīla A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharis Śrīmad His Divine Grace Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Śrīla Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Brinda ki Nam Acharya Śrīla Haridas Thakur ki Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhana ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadvip Dham ki Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulasi Maharani ki Shri Shri Gaura ki Shri Shri Krishna Balaram ki Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis ki Shri Shri Radha Gopinath ki Shri Shri Radha Gopal Chuki Shri Shri Radha Madhava ki Samaveda Bhakti Vrinda ki Premanam Sankirtan Jagya ki Transcendental Book Distribution ki Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru, Shri Gauranga Mahaprabhu, Srila Prabhupada, Srila Gurudeva ki. Hare Krishna. You ready? आप तैयार हैं? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading Bhagavad Gita in the 15th chapter, the Yoga of the Supreme Person. तो हम श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ रहे हैं 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग And we're going to read text number 20. और हम श्लोक संख्या 20 पढ़ने वाले हैं. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki. जय. Please repeat. कृपया दोहराइए. Iti guhya-tamam śāstram idam uktam mayā anagha etad buddhvā buddhimān syāt kṛta-kṛtyaḥ Bharata iti guhya-tamam śāstram idam uktam mayānagha etad buddhvā syāt etad buddhimān syāt kṛta-kṛtyaś Bharata iti guhya-tamam śāstram idam uktam mayānagha etad buddhimān syāt kṛta-kṛtyaś Bharata. Please repeat. कृपया दोहराइए. Iti. Thus. इसलिए. Guhya-tamam. The most confidential. सबसे रहस्यमय. Śāstram. Revealed scripture. प्रकाशित ज्ञान. Idam. This. यह. Uktam. Disclosed. बाहर निकाला गया. Maya.
by me, मेरे द्वारा, anagha, O sinless one, ओ पापों से रहित, etad, this, यह buddhvā, understanding, समझ, buddhimān, intelligent, बुद्धिमान, syāt, one becomes, कोई होता है, kṛta-kṛtyaḥ, the most perfect in his endeavors, जो अपने प्रयासों में पूर्ण होता है, and और Bharata, O son of Bharata. हे भरत पुत्र. Translation and purport by Srila Prabhupada. अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का. Krishna is speaking to Arjuna and says, this is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one. कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, ये सभी वैदिक ग्रंथों का सबसे रहस्यमय ज्ञान है, पाप रहित अर्जुन. And it is disclosed now by me. और ये अब मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा. And whoever understands this, और जो भी इसको समझ पाता है, will become wise. वो बुद्धिमान बन जाएगा. And his endeavors will know perfection. और वो उसके प्रयास हमेशा सफल होंगे. Please repeat. कृपया दोहराइए. This is the most confidential part of the Vedic scriptures. This is the most confidential part of the Vedic scriptures. O sinless one. O sinless one. And it is disclosed now by me. And it is disclosed now by me. Whoever understands this, will become wise. And his endeavors, will know perfection. Purport by Srila Prabhupada. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का. The Lord clearly explains here that this is the substance of all the revealed scriptures. भगवान यहाँ बहुत साफ तरीके से बता रहे हैं, ये सारे वैदिक ग्रंथों का सार है. And one should understand this as it is given by the Supreme Personality of Godhead. और इसे किसी को उसी तरह समझना चाहिए जैसा भगवान श्री कृष्ण इसको प्रदान कर रहे हैं. Thus one will become intelligent. इसीलिए कोई बुद्धिमान बन सकता है. And perfect in transcendental knowledge. और दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो सकता है. So if we understand this directly from the Supreme Lord, we will become intelligent and perfect in transcendental knowledge. तो अगर हम इसे परम पुरुषोत्तम भगवान से समझ पाते हैं तो हम बुद्धिमान बन जाएंगे और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे. In other words, by understanding this philosophy of the Supreme Personality of Godhead, और दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर हम इस सिद्धांत को समझ पाते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान के, and thus engaging in his transcendental loving service, और फिर उनके दिव्य प्रेम में सेवा में लगते हैं, everyone can become freed from all contaminations of the modes of material nature. कोई भौतिक प्रकृति के गुणों से पूर्णतः मुक्त हो सकता है. Devotional service is a process of spiritual understanding. भक्ति में सेवा एक कृष्ण को सेवा करने की समझने की प्रक्रिया है. Wherever devotional service exists, the material contamination cannot coexist. जहाँ पे भी भक्ति में सेवा होती है वहाँ भौतिक गंदगी कलमश नहीं होता. Devotional service to the Lord and the Lord Himself are one and the same. भगवान की भक्ति में सेवा और भगवान दोनों अभिन्न हैं. Because they are spiritual. क्योंकि ये आध्यात्मिक है. Devotional service takes place within the internal energy of the Supreme Lord. भगवान की भक्ति में सेवा भगवान के अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होती है. The Lord is said to be the sun, and ignorance is called darkness. भगवान को कहा जाता है सूर्य और अंधकार को कहा जाता है अज्ञान. When the sun is present, there is no question of darkness. जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं होता. Therefore, whenever devotional service is present under the proper guidance of a bona fide spiritual master, इसलिए जहाँ भी भक्ति में सेवा की जाती है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के दिशा निर्देशन में, there is no question of ignorance. वहाँ अज्ञान का कोई सवाल नहीं उठता. Everyone must take to this consciousness of Krishna and engage in devotional service. इसलिए प्रत्येक को इस कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को चुनना चाहिए और भक्ति में सेवा में स्वयं को लगाना चाहिए. In order to become intelligent and purified. ताकि बुद्धिमान और शुद्ध बन सकें.
Unless one comes to this position of understanding Krishna and engages in devotional service, जब तक कोई इस बात को नहीं समझ पाता कृष्ण के विज्ञान को और उनके भक्ति में सेवा में नहीं लगता, however intelligent he may be in the estimation of the common man, सामान्य लोगों के मानने में वो भले हो सकता है बहुत बुद्धिमान हो, he is not perfectly intelligent. वो पूर्ण बुद्धिमान नहीं हो सकता। The word anagha by which Arjuna is addressed is very significant. और यहाँ पे अर्जुन को अनाग्रह शब्द से संबोधित किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। Anagha means O sinless one. अनाग्रह का अर्थ है जो पापों से रहित है। Means that unless one is free from all sinful reactions, इसका अर्थ है जब तक कोई सारे पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, it is very difficult to understand Krishna. कृष्ण को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। One has to become free from all contamination, किसी को सारे गंदगी से मुक्त होना होगा, all sinful activities, सारे पाप कर्मों से, and sinful reactions. पाप कर्मों के फलों से, Then he can properly understand. तब वो सही तरीके से समझ सकते हैं। But devotional service is so pure and potent लेकिन भक्ति में सेवा इतना शुद्ध और इतना शक्तिशाली है that once one is seriously engaged in devotional service, कि जब एक बार कोई गंभीरता से भक्ति में सेवा में लगता है, he automatically comes to the stage of sinlessness. वो अपने आप ही इस पापों से रहित वाले स्थान तक पहुंच जाता है। While one is performing devotional service in the association of pure devotees in full Krishna consciousness, और जब कोई इस भक्ति में सेवा में लगता है भगवान के शुद्ध भक्त के सानिध्य में पूर्ण कृष्ण भावनामृत में, there are certain things which require to be vanquished or destroyed altogether. कुछ निश्चित चीजें हैं जिनको पूर्ण रूप से खत्म करने की जरूरत होती है। The most important thing one has to surmount is weakness of the heart. और सबसे प्रथम चीज जो किसी को खत्म करनी होती है हृदय की दुर्बलता। The first fall down is caused by the desire to lord it over material nature. पहला पतन होता है हमारी इस इच्छा की वजह से कि हम इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं। Thus one gives up the transcendental loving service of the Lord. और वो भगवान का दिव्य प्रेम में सेवा छोड़ देता है। The second weakness of the heart is that one increases the propensity to lord it over material nature. और हृदय की दूसरी दुर्बलता है वो उसकी इच्छा तीव्र होने लगती है इस भौतिक जगत का भोग करने के लिए। And becomes attached to matter. और वो जड़ चीजों से आसक्त हो जाता है। And the possession of matter. और उस जड़ चीजों से उसके स्वामित्व पे। The problems of material existence are due to these weaknesses of the heart. और भौतिक अस्तित्व का कारण यही है इस हृदय की दुर्बलता के कारण। In this chapter, और इस अध्याय में the first 5 verses describe the process of freeing oneself from these weaknesses of heart. सबसे पहली प्रक्रिया बताई गई है कैसे अपने हृदय को इस दुर्बलताओं से मुक्त किया जा सकता है। And the rest of the chapter, from the 6th verse to the end, discusses Purushottam Yoga. और इस अध्याय के आखिरी 6 श्लोकों में भगवान के पुरुषोत्तम 6ठे श्लोक से भगवान के पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया गया है। Om Jnana-timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Srila Prabhupada, Srila Gurudev Ki. Again, translation. अनुवाद फिर से। This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one. ये वैदिक सारे वैदिक ग्रंथों का सबसे रहस्यमय ज्ञान है पाप रहित। And it is disclosed now by me. और अब ये मेरे द्वारा प्रकट किया जाएगा। Whoever understands this will become wise. जो भी इसको समझ पाएगा वो बुद्धिमान बन जाएगा। And his endeavors will know perfection. और उनके प्रयास सफल होंगे। So because Arjuna is sinless, he is pure. क्योंकि अर्जुन पापों से रहित है, पूरी तरह शुद्ध है। By mercy of Guru and Krishna. गुरु कृष्ण की कृपा से। Therefore, he is able to understand the most confidential part of the Vedic scriptures. इसीलिए वो समझ पाए इस वैदिक ग्रंथ के सबसे रहस्यमय ज्ञान को। Krishna says, by all the Vedic knowledge, I am to be known. कृष्ण कहते हैं सारी वैदिक ग्रंथों के द्वारा तुम मुझे जानो। So if we are not purified and reading on material platform, falsical platform, we cannot really know Krishna, therefore we're not really surrendered to Krishna. तो अगर हम इस मिथ्या अहंकार के स्तर पे हैं तो हम सरलता से बस पढ़कर इन सारी चीजों के बारे में कृष्ण के बारे में समझ नहीं सकते और इसीलिए हम उनको शरणागत भी नहीं कर सकते। It just remains a theoretical knowledge. बस हमारा ज्ञान मौखिक रह जाता है। So here Prabhupada is explaining in the purport. तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं
that by understanding directly from Krishna, one will get perfect knowledge and intelligence. सीधे सीधे कृष्ण से समझने से आप पूर्ण ज्ञान पूर्ण बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं. If we can hear Krishna. अगर हम कृष्ण को सुन सकते हैं. Can you hear Krishna? क्या आप कृष्ण को सुन सकते हैं? Who are you listening to? आप किसको सुन रहे हैं? The mind. मन को. Under the modes of material nature, tamagun. प्रकृति के गुणों के अंदर तमोगुण. And tamagun means sinful, too much sinful activity, too much sinful reaction. तमोगुण का अर्थ है बहुत सारा पाप कर्म और पाप कर्म का फल. That is causing this ignorance, this dhamma. इसी की वजह से ये अज्ञान, ये तमोगुण. You cannot see the sun because too much clouds are there. आप सूर्य को नहीं देख पा रहे क्योंकि बहुत सारे बादल हैं. So to try to understand Krishna while we're under the modes of material nature, it's not possible. तो कृष्ण को समझने का प्रयास करना जब हम प्रकृति के गुणों के अधीन One हैं, must become completely sinless. किसी को पूर्ण पाप सभी पापों से Now मुक्त होना Prabhupada होगा. said if you sincerely, seriously engage in pure devotional service under the guidance of bona fide Guru by their mercy and the potency of pure devotional service, then you will become free from sinful desire and sinful reaction. और श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं अगर आपको अपने आप को शुद्ध प्रेम में भक्ति में लगाते हैं शुद्ध भक्त के सानिध्य में उनके सही दिशा निर्देशन में तो आप इस शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया शक्तिशाली प्रक्रिया से आप ही पापों से रहित हो सकते हैं. So without seriously, sincerely engaging in devotional service, how will get mercy of Krishna and Krishna is pure devotee. तो अगर आपने आपको गंभीरता से ईमानदारी से हम कृष्ण भावना या भक्ति में प्रक्रिया में नहीं लगाएंगे कैसे हम कृष्ण या कृष्ण के भक्त की Krishna is the witness and he is the judge of our quality and quantity of devotional service. और कृष्ण गवाह है वो न्याय करता है हमारे गुणवत्ता के शरणागत और हमारी सेवा के. If it's not sincere and serious, Krishna will know. अगर ये गंभीर ईमानदार नहीं है तो कृष्ण उसको जान जाएंगे. We cannot cheat Krishna. हम कृष्ण को ठग नहीं सकते. He knows better than we know. वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं. He knows past, present and future as well. वो भूत भविष्य और वर्तमान भी जानते हैं. So we cannot cheat him. My Gurudev many times said you cannot cheat Krishna. तो हम उनको ठग नहीं सकते. गुरुदेव ने कई बार बताया आप कृष्ण को ठग नहीं सकते. So sincerity and seriousness in the execution of devotional service under guidance of bona fide spiritual master is the very means to receive special mercy. तो एक निष्ठता और गंभीरता से भक्ति में सेवा में लगना प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में यही एकमात्र प्रक्रिया है उनकी कृपा को प्राप्त करना. Prabhupada says in spiritual life, the mercy of the spiritual master, everything in your spiritual life, advancement in your spiritual life is more or less based on the mercy of your spiritual master. और प्रभुपाद ने कई बार कहा है आप जितने भी आध्यात्मिक प्रगति करेंगे ये कम या ज्यादा ये आपके आध्यात्मिक गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर है. So if we're not faithful, we're not serious, we're not surrendering, we're doubting, hesitating, being crooked, then how will we get mercy? तो अगर हम श्रद्धावान नहीं हैं, हम संदेह कर रहे हैं, हम कुटिल बन रहे हैं, हम पागल की तरह ऊपर बर्ताव कर रहे हैं, तो कैसे हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं? And without the mercy of the spiritual master, mercy of Krishna, how will all of this tamma gun, all of this sinful desire, sinful reaction be purified from the heart and consciousness? और बिना गुरु और कृष्ण की कृपा के कैसे हमारे अंदर भीतर जो इतनी गंदगी है, इतना तमोगुण है, इतना अज्ञान है, कैसे इसको शुद्ध किया जा सकता है? So Krishna says, if you surrender to me, I'll destroy the sinful reaction. कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे शरणागत करेंगे मैं आपके पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा. So just knowing that theoretically is not making us to fully surrender to Krishna. तो बस मौखिक रूप से अगर हम ये जान चुके हैं लेकिन ये हमें योग्य नहीं बना पा रहा है कि हम कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत कर पाएं. So combined mercy, mercy of Krishna, mercy of his representative bona fide guru, that's required. तो कृष्ण की कृपा और उनके प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा दोनों की कृपा मिश्रित कृपा की जरूरत है हमें. Krishna says to show special mercy, I destroy all of that tamagun, all of the sinful reactions in the heart of the conditioned soul. कृष्ण बताते हैं अपनी विशेष कृपा देने के लिए मैं सारा तमोगुण सारा ज्ञान मैं नष्ट करता हूँ जीवात्मा के हृदय से. So how convinced are we? तो हम कितने आश्वस्त To want to fully surrender to Krishna? कि हम कृष्ण को पूर्ण शरणागत करना चाहते And हैं. how much are we deserving to receive that special mercy of purification of mind and senses? That is the question. और हम कितने लायक बन रहे हैं उस कृपा को पाने के लिए ताकि हम शुद्धिकरण प्राप्त कर सकें ये दूसरा सवाल है. And without receiving that purification of mind and senses freed from sinful desire, sinful reaction, we cannot actually understand this internal spiritual energy of the Lord. तो बिना इस शुद्धिकरण के मन और इंद्रिय के और अपने आप को बिना शुद्धिकरण प्राप्त किए बिना हम भगवान की भक्ति में सेवा को नहीं समझ सकते जो अंतरंगा शक्ति द्वारा की जाती है. So many times we hear devotees ask question, how does a conditioned soul
understand, and then they say something on transcendental platform. कई बार भक्त सवाल पूछते हैं कि कैसे कोई बद्ध जीवात्मा समझ सकता है, और फिर वो कहते हैं दिव्य स्तर की इन चीजों को स्तर में जो है। And we always keep saying same thing. They cannot understand. और हम बार बार यही चीज कहते हैं कि वो नहीं समझ सकते। So instead of trying to understand something which is beyond our ability to understand, we should rather think what is required of me in order to be able to understand it. तो इस बात को समझने के बजाय कि हमारी क्षमता नहीं है उस चीज को समझ पाने के लिए, हमें ये समझना होगा हमें क्या करना होगा ताकि हम उसके लायक बन सके जो हम उसको समझ सकें। So Krishna is saying, get mercy of Guru and Krishna, purify your consciousness. तो कृष्ण बताते हैं आप अपनी चेतना को शुद्ध कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। Prabhupada's whole process is, Mahaprabhu's process is just hearing and chanting about Krishna as much as possible. और महाप्रभु कृष्ण की पूरी प्रक्रिया है श्रवण कीर्तन करना जितना ज्यादा संभव हो सके। Krishna is purest of the pure. कृष्ण शुद्धता में विशुद्ध है। If we sincerely try our best to hear and chant about Krishna, and Krishna agrees to manifest within our kṛta, then by his association, this mind, intelligence, senses can become purified. तो अगर हम गंभीर ईमानदार होते हैं कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए और कृष्ण सहमत होते हैं वहाँ प्रकट होने के लिए, तो उनकी कृपा से हमारा मन बुद्धि इंद्रिय शुद्ध हो सकता है। So without our seriousness and sincerity in hearing and chanting about Krishna, Krishna will not manifest. तो अगर हम गंभीर ईमानदार नहीं है कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए, तो कृष्ण वहाँ प्रकट नहीं हो सकता। Just like we're chanting japa, but our minds are completely distracted. जैसे हम जप कर रहे होते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और भटका होता है। We're not paying attention. We're focusing on all materialistic types of thoughts and desires and attachments and plans. हम ध्यान पूर्वक जब नहीं करते हैं सारे तरह की भौतिक चिंताओं, भौतिक विचार, भौतिक योजनाओं, भौतिक इच्छाओं के प्रति सोचते रहते हैं असीमित रूप से। Prabhupada says we're addicted to mental speculation. प्रभुपाद कहते हैं हमें बुरी लत लगी हुई है मनोधर्म करने की। Are addicted to mental speculation and chanting. It's just offensive type of chanting. तो अगर हमारी बुरी लत लगी हुई इस तरह से मनोधर्म करने की और हम जप कर रहे हैं तो ये नाम अपराध है। We're chanting, but we're meditating on material desires, material attachments. हम जप कर रहे हैं लेकिन हम ध्यान लगाए हैं भौतिक इच्छाओं में, भौतिक आसक्तियों में। So Bhaktivinoda Thakur says you get the fulfillment by that kind of chanting. You get the fulfillment of your material desires. तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया इस तरह के जप से आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। So we're chanting, but we're telling Krishna, actually, I want something material. हम जप कर रहे हैं लेकिन हम असल में कृष्ण को कह रहे हैं कि हम कुछ भौतिक चीज चाहते हैं। So Krishna knows what is your real desire, and he fills your desire. तो कृष्ण को पता है आपका असल इच्छा क्या है और आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। So Prabhupada said, first try to come to the level of chanting without offense. तो श्रील प्रभुपाद ने इसने कहा कि पहले किसी तरह अपराधों से मुक्त होकर जप करने का प्रयास करो। This is the next नामाभास stage. Try to come to that level of chanting. ये अगला स्तर है नामाभास स्तर, उस स्तर तक जप करने का And प्रयास beyond कीजिए। that is a Shuddhanam, और chanting purely. और उसके ऊपर है शुद्ध नाम, शुद्ध तरीके से जप करना। How to develop pure loving devotional service to Krishna. कैसे शुद्ध प्रेम में भक्ति प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण की। So if we are hearing and chanting but completely distracted by materialistic thoughts, desires, plans, conceptions, then it's offensive hearing and chanting. तो अगर हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं लेकिन हमारा मन पूरी तरह से भटका हुआ है भौतिक इच्छाओं में, आसक्तियों में, भौतिक विचारों में, तो ये इस तरह का नाम अपराध श्रवण कीर्तन है। And unless it is done purely, sincerely, why do we think Krishna will manifest in our hearing and chanting? अगर हम इसे शुद्ध तरीके से ईमानदारी से नहीं करते हम क्यों सोचते हैं कृष्ण सहमत होंगे वहाँ प्रकट होने के लिए? So Prabhupada said that the speaker must be qualified, but the hearer must also be qualified. तो प्रभुपाद ने कहा है वक्ता को योग्य होना होगा लेकिन श्रोता को भी योग्य होना होगा। So Prabhupada said the process of Krishna consciousness, process of purification, especially in the beginning. श्रील प्रभुपाद ने बताया है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया है विशेष करके शुरुआत में। And we always say that when we join Cetodapana Marjanam, you have to just clear up the dust off the mirror. और हम कई बार बात करते हैं शुरुआत में हम बताया गया कि हाँ चेतो दर्पण मार्जन करना है, थोड़ा धूल हटाना है। Then we find out later it's not a little bit of dust, it's like Himalayan mountains. और बाद में हम पता चला कोई थोड़ा मोड़ा धूल नहीं है, हिमालय पर्वत जैसा गंदगी है। My Gurudev used to say thick layer. मेरे गुरुदेव कहा करते थे मोटी 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 परत है। So we don't have a little dust on the mirror to clean off here. तो हमारी कोई थोड़ी सी धूल नहीं है दर्पण में साफ करने। And especially if we're being whimsical and not serious and not chanting or hearing and chanting in a serious, sincere way, how do we think that all of this dust of materialism, sinful desire, sinful attachment, reaction is going to come off?
तो अगर हम इस तरह से मनोधर्म कर रहे हैं, गंभीर नहीं, ईमानदार नहीं अपने श्रवण और कीर्तन में, तो कैसे हमारे अंदर जो इतनी धूल, इतनी गंदगी है, साफ हो पाएगी? And unless we are purified enough by the mercy of Guru and Krishna in our mind and our senses, how will we understand transcendental, fourth dimensional spiritual knowledge? How will we really understand it? अगर हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिय शुद्ध नहीं होगा गुरु कृष्ण की कृपा से, कैसे हम दिव्य स्तर के चतुर्थ आयाम की चीजों को समझ पाएंगे? Which means that one directly can hear Krishna. इसका मतलब है कोई सीधे सीधे कृष्णा को जब सुनता है। Krishna is the speaker of the Srimad Bhagavatam. कृष्ण श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं। He's the source of all knowledge and intelligence. वो सारे ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं। Krishna says, "Touch Shrinu, hear from me." कृष्ण कहते हैं, तत् श्रृणु, मुझसे श्रवण करो। But if out of your false ego and your pride under the material modes of nature is there, you can't hear me properly. लेकिन अपने मिथ्या अहंकार से, दंभ से, इस भौतिक चेतना की वजह से अगर आप मुझे सुन नहीं पाते हैं सही तरीके से, So if we cannot hear Krishna, how can we know Krishna? तो अगर हम कृष्ण को सुन नहीं सकते, हम उनको समझ कैसे पाएंगे? So to know Krishna means Krishna has to agree. कृष्णा को जानने के लिए इसका मतलब कृष्णा को सहमत होना होगा। If he doesn't agree to reveal himself, then what are we going to know about Krishna on our own? तो अगर कृष्णा सहमत नहीं होते अपने आप को प्रकट करने के लिए हमारे सामने, तो हम स्वयं से कैसे जान पाएंगे कृष्ण? Krishna is telling Arjuna, I'm going to describe now the most confidential part of the Vedic scriptures to you. कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि अब मैं आपको वैदिक शास्त्रों का सबसे रहस्यमय ज्ञान बताने वाला हूँ। Because you are sinless personality, you're pure devotee. क्योंकि आप पापों से रहित हैं, आप शुद्ध भक्त हैं। So now because of that purity, you'll be able to hear me. I'll disclose everything to you. और अब इस शुद्धता की वजह से आप मुझे सुन पाएंगे, इसलिए मैं आपके सामने सब कुछ प्रकट करूंगा। Everything of myself, everything of the material world, everything of the spiritual world, nothing will be left out. स्वयं के बारे में, सब कुछ भौतिक जगत के बारे में, सब कुछ आध्यात्मिक जगत के बारे में, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। So if we're hearing perfect knowledge from perfect source, Prabhupada says, then your intelligence, your knowledge will be perfect. तो प्रभुपाद बताते हैं, अगर आप पूर्ण ज्ञान, पूर्ण स्रोत से श्रवण कर रहे हैं पूर्ण तरीके से, तो आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि भी पूर्ण होगी। So Prabhupada says, he translates it, whoever understands this from me, he will become wise. यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद अनुवाद में, जो भी ये समझ पाएगा मेरे द्वारा, वो बुद्धिमान हो पाएगा। So if we can hear perfect knowledge from perfect source, by their mercy, you can become perfect in your understanding. तो अगर हम पूर्ण ज्ञान, पूर्ण स्रोत से पूर्ण तरीके से सुन रहे हैं, तो हमारा, उनकी कृपा से हमारा ज्ञान भी पूर्ण हो जाएगा। Whoever can hear me, whoever can understand what I'm telling, जो भी मुझे सुन सकता है, जो भी मुझे समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, he will become wise man. वो बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा। And his endeavors will know perfection. और उनके प्रयास सफल हो पाएंगे। So perfect knowledge from perfect source, how to know Krishna, get Krishna, surrender to Krishna, develop love for Krishna. तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण स्रोत से कैसे कृष्ण को जान सकते हैं, कैसे कृष्ण को शरणागत कर सकते हैं, कैसे उनके प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। But we have a hearing problem. लेकिन हमारे श्रवण की समस्या है। We're hearing. हम सुन रहे हैं। Definitely we're hearing. अवश्य हम सुन रहे हैं। But who are we hearing from? लेकिन हम किसे सुन रहे हैं? Is it Krishna? क्या ये कृष्ण है? Or is it Maya? या माया है? We're surrendered. हम शरणागत कर रहे हैं। Definitely we're surrendering. अवश्य हम शरणागत Are कर we रहे हैं। surrendering to Krishna? क्या हम कृष्ण को शरणागत कर Or to रहे Maya? हैं या माया को? Definitely we're associating. अवश्य हम संग कर रहे We're हैं। social beings. हम सामाजिक प्राणी हैं। Are we doing asatsanga हम असत्संग कर रहे हैं or satsanga? या सत्संग कर रहे हैं? One is sat, one is asat. एक सत है, दूसरा असत। Everyone's motivated. सभी कोई प्रेरित हैं, Is it spiritual motivation? लेकिन क्या वो For आध्यात्मिक pure प्रेरणा devotional है, service? शुद्ध भक्ति के लिए, Or is it material या motivation? भौतिक प्रेरणा है, For karma, jnana, yoga, कर्म, ज्ञान, योगा, or worse? या उससे भी बुरा? Krishna is the witness, he's the judge. कृष्ण गवाह है, वो न्याय करता So है। if we really want to understand Krishna and understand absolute truth, purification of mind, intelligence, senses, that is required. तो अगर हम शुद्ध भक्ति और कृष्ण को समझना चाहते हैं, तो मन, बुद्धि, इंद्रिय की शुद्धता सबसे पहली जरूरत है। We must realize our heart, mind, consciousness completely contaminated. हमें साक्षात्कार करना होगा, हृदय, मन, चेतना पूरी तरह से गंदी है। If we're conscious, honest enough, we can understand. No, my mind, intelligence, senses are not thinking how to lovingly serve Krishna. अगर हम इतना चेतन है, इतने ईमानदार है, तो हम देख पाएंगे मेरा हृदय, मेरे मन, चेतना कृष्ण को सेवा करने के बारे में, प्रेम में सेवा के बारे में नहीं सोच रहा।
Because your intelligence is many branched. कृष्ण बताते हैं आपकी बुद्धि बहुत शाखाओं में बटी है, Your intelligence is splayed out. आपकी बुद्धि बटी हुई है। Because of that resolute determination to surrender and serve Krishna not manifesting itself. इसलिए दृढ़ निश्चय कृष्ण को सेवा करना, उनको शरणागत करना प्रकट नहीं हो पा रहा। And why is that? It's explained here, Prabhupada said, because of weakness of the heart. और क्यों ऐसा बताया गया है? श्रील प्रभुपाद ने बताया हृदय की दुर्बलता की वजह से। The word anagha, by which Arjuna is addressed, is significant, means O sinless one. और अनाग्रह शब्द से जब अर्जुन को संबोधित किया गया, इसका विशेष महत्व है। इसका अर्थ है पापों से रहित। So unless we associate in here properly in the proper association, then we'll not be able to vanquish or purify all of the sinful desires, sinful reaction. तो अगर हम सही संग में सही तरीके से श्रवण नहीं करेंगे तो संभव नहीं है इस तरह से गंदगी को शुद्ध करना, उनसे मुक्त प्राप्त कर पाना। So Prabhupada says the most important thing one has to surmount or overcome is weakness of the heart. प्रभुपाद बता रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज जो किसी को बाहर उससे निकलना है, ये हृदय की दुर्बलता से। Because so long acting as servant of Maya, क्योंकि काफी लंबे समय से माया के सेवक के दास के रूप में कार्य कर रहे हैं। no good spiritual strength and intelligence, always victimized by Maya. हमारे असल आध्यात्मिक बुद्धि शक्ति नहीं है, हमें हमेशा माया के द्वारा प्रताड़ित हुए हैं। Therefore, it's leaving us in a weakened position. इसलिए हम बहुत कमजोर स्थिति में हैं। So Prabhupada said, this weakness of the heart, the first fall down is caused because we're desiring to lord it over the material nature. और प्रभुपाद बता रहे हैं सबसे पहला पतन इसीलिए होता है क्योंकि हमारी इच्छा होती है इस भौतिक जगत का स्वामी बनने के लिए। So we want to try to enjoy material nature instead of trying to give enjoyment to Krishna. तो हम प्रकृति का भोग करना चाहते हैं, कृष्ण को आनंद देने की So this बजाय। attachment, material desire, very, very deep-rooted problem. तो भौतिक आसक्ति, भौतिक इच्छा बहुत गहराई तक समस्या है। And it's all due to bodily attachment. और ये सब शरीर की आसक्ति की And वजह से, attachment to bodily relationships. और शरीर से जिनका भी संबंध है उनसे आसक्ति होने की वजह से। So because of that misidentification and attachment to the family, bodily relations, every other sinful desire or activity comes because of that attachment. और इस तरह से अपनी गलत पहचान की वजह से और अपनी गलत पहचान शरीर से हम जो भी व्यक्ति शरीर से संबंधित हैं उनसे आसक्ति होने की वजह से सारे हमारे पाप में इच्छाओं विचारों का जड़ यही आसक्तियां हैं। Right? This asat sangha. असत्संग, Serving and trying to please in Maya's family, not in Krishna's family, Guru Krishna's family. सेवा कर रहे हैं और माया के परिवार को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण और कृष्ण के परिवार को सेवा उनको प्रसन्न करने So की वजह। because of this deep-rooted material desire and bodily consciousness, bodily relations, तो इस बहुत गहराई तक भौतिक इच्छाओं की वजह से, one भौतिक then आसक्तियों की out वजह से, of weakness of the heart gives up the transcendental loving service of the Lord. इस हृदय की दुर्बलता की वजह से कोई भगवान का दिव्य प्रेम में सेवा त्याग करता है। Because we become attached to matter क्योंकि हम जड़ चीजों से आसक्त हो जाते हैं and the possession of matter, और उसका स्वामित्व से, I, me and mine, मैं मेरा, then the problems of this material existence are due to this weakness of the heart. और इस भौतिक अस्तित्व का हमारा यही कारण है, इस हृदय की दुर्बलता के कारण। So just to theoretically understand is not sufficient. तो बस मौखिक रूप से समझ लेना पर्याप्त नहीं है इसको। We need spiritual strength. हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। And without Krishna's mercy and Gurudev's mercy, association with devotees, how will we get the spiritual strength and intelligence how to proceed in the path of bhakti? तो बिना गुरु और कृष्ण की कृपा के और सही भक्तों के संग के कैसे हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के To लिए? go to the purification stage, this tapodivyam, is very difficult. इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से तपोदिव्यम से निकलना बहुत मुश्किल है If we do it properly. अगर हम सही तरीके से करें तो। It's not easy to go through that. इतना आसान नहीं है इससे निकल So पाना। without association and shelter and protection of a guru and devotees, it's not possible to go to that purification stage. बिना संघ के, बिना आश्रय रक्षण के, गुरु और भक्तों के इतना आसान नहीं है शुद्धिकरण की प्रक्रिया से निकल पाना। Devotional service is a process of purification ये भक्ति में प्रक्रिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया है and spiritual development of spiritual understanding. और कैसे आध्यात्मिक समझ विकसित कर सकते हैं। And when we do it properly under the guidance of bona fide spiritual master, automatically the material contamination will
will not coexist, Prabhupada says. और अगर हम इसे सही तरीके से करें प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के दिशा निर्देशन में तो अपने आप ही ये भौतिक गंदगी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। प्रभुपाद So we need the association of Krishna. तो हमें कृष्णा का संग चाहिए। Krishna is the purest of the pure. कृष्णा शुद्धतम में भी शुद्ध है। And Krishna says, although I am the supreme controller, I can be controlled. और कृष्ण कहते हैं मैं परम नियंत्रण करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे नियंत्रण में किया जा सकता I है। can be conquered मुझे जीता जा सकता by है। my devotees who are sincerely and seriously hearing and chanting about me. मेरे उन भक्तों के द्वारा जो गंभीरता से ईमानदारी से मेरे बारे में श्रवण और कीर्तन करते हैं। So if we cannot sincerely, seriously preach and hear about Krishna, where Krishna will manifest there, where will there be a process of purification? तो अगर हम ईमानदारी से गंभीरता से कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करके उनके बारे में प्रचार नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो कैसे सवाल है कृष्ण वहाँ प्रकट हो और शुद्धिकरण प्राप्त कर सके। If our hearing and chanting is offensive, Krishna will not manifest there. अगर हमारा श्रवण कीर्तन अपराधों से है तो वहाँ पर कृष्ण प्रकट नहीं हो And सकते। without Krishna, who is the purest of the pure, where is this special mercy to purify all of this tamagun? Where is it going to come from? और कृष्ण प्रकट नहीं होंगे जो शुद्धतम में भी शुद्ध है, तो कैसे सवाल है इस अपनी इस विशेष कृपा को प्राप्त करने का ताकि हम इस तमोगुण से शुद्ध हो सके, मुक्त हो सके। Prabhupada said everyone must take to this consciousness of Krishna and engage in serious and sincere devotional service. श्री कृष्ण प्रभु बताते हैं किसी को इस कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना चाहिए और गंभीरता से इस भक्ति में सेवा में लगना चाहिए। In order to first become purified ताकि सबसे पहले शुद्ध हो सके of this all material contamination, and then you become intelligent. इस भौतिक गंदगी से, और फिर उसके बाद आप बुद्धिमान बन सकते हैं। And unless one comes to that position of understanding Krishna जब तक कोई उस स्थिति में पहुंच पाता है कृष्ण को समझ पाने की स्थिति and engages in this quality of devotional service, और इस गुणवत्ता के साथ उनकी भक्ति में सेवा में लगता है, however intelligent they may be in the estimation of the common man, हो सकता है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो सामान्य जनों की नजर में, they are not perfectly intelligent. वो पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं है। So Prabhupada said this devotional service, if done properly, is so pure and potent. श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये भक्ति में सेवा इतना शक्तिशाली है, इतना शुद्ध है। So devotional service that's materialistic or it's external or mechanical, if Krishna doesn't manifest there, then what's so pure and potent about the execution of our devotional service? तो अगर हमारा भक्ति में सेवा भौतिक है, किसी न किसी उद्देश्य से प्रभावित है, तो कैसे कृष्णा वहाँ प्रकट होंगे, सहमत होंगे इस तरह के अशुद्ध प्रक्रिया में? We're all saying we're devotees, we're doing devotional service. हम सब कहते हैं हम भक्त हैं, हम भक्ति में सेवा कर रहे हैं। But what is the quality of that devotional service? लेकिन हमारे भक्ति में सेवा का गुण कितना है? Is it pure? क्या ये शुद्ध है? Or is it materialistic, materially motivated? या फिर भौतिक है, भौतिक प्रेरणा से प्रभावित है? If it's materialistically motivated, Krishna will not manifest there. अगर भौतिक रूप से ये प्रेरित है तो कृष्णा वहाँ प्रकट नहीं होंगे, Because we want something else. क्योंकि हम कुछ और चाहते हैं। So when it talks about that the devotional service is so pure and it's so potent, that means Krishna manifesting there. तब यहाँ बताया जा रहा है शुद्ध भक्ति इतनी शुद्ध है, इतनी शक्तिशाली है, इसका मतलब कृष्णा वहाँ प्रकट होते हैं। Then one will automatically get purified and become sinless. तो कोई अब स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो सकता है और पापों से मुक्त हो सकता है। So just saying, well, we're doing devotional service, no. What is the quality of that service? तो हम बस कहते रहे कि हम भक्ति में सेवा कर रहे हैं, तो लेकिन हमारे भक्ति में सेवा की गुणवत्ता कितनी है? What is the quality and what is the quantity of that service? गुणवत्ता और मात्रा कितनी है हमारी सेवा की? How sincere and serious is it? कितना ईमानदार और गंभीर है वो? And who are we doing it for? और हम ये किसके लिए कर रहे For हैं? whose pleasure? किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं? Now Krishna is the judge of that, और कृष्णा उसका फैसला and करेगा। Krishna says, I'll reward you accordingly. और कृष्ण कहते हैं मैं उसी के आधार पे आपको फल दूंगा। Sometimes it's said, as you surrender unto me, I'll reveal myself to you proportionally. कभी-कभी ऐसा बताया गया है जिस भाव से आप मुझे शरणागत करेंगे मैं उसी के आधार से आपको शरणागत करूंगा। So without genuine surrender and service, there's no question of Krishna revealing himself to us. तो सही तरीके से ईमानदारी से अगर हमको शरणागत नहीं करे तो कृष्णा हमें प्रकट नहीं करेंगे अपने आप Or us expecting and demanding a spiritual reward. या फिर हम उम्मीद कर सकते हैं या मांग कर सकते हैं हमें आध्यात्मिक फल दिया जाना चाहिए। Well, I think my devotional service is sincere and serious. मैं सोचता हूँ मेरा भक्ति में से वो बहुत ईमानदार गंभीर है। And therefore, I'm expecting a certain spiritual reward. और इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा आध्यात्मिक फल मिलना And चाहिए। it's not coming. और ये आ नहीं रहा है। And I don't like it. और मुझे ये पसंद So I नहीं। don't know if I want to do this anymore. तो अब मुझे नहीं लगता मैं इसको और करना चाहता हूँ।
So we're determining the quality and the quantity of that devotional service. तो क्या हम We're the फैसला judge of that. तो क्या हम फैसला करेंगे हमारी भक्ति में सेवा की गुणवत्ता और मात्रा कितनी है? क्या हम उसका न्याय करता है? And then we'll determine what kind of reward we deserve. और क्या हम फैसला करेंगे किस तरह का हमें पुरस्कार मिलना चाहिए? And then when we don't see it, we'll start doubting the whole process. और जब हमें ये नहीं मिलेगा तो हम पूरा प्रक्रिया में संदेह करने We'll लगेंगे। become fed up because we're not getting whatever we want. हम थक जाएंगे क्योंकि हमें वो नहीं मिल रहा है जो हम चाहते Well, हैं। I think I should be rewarded, much more than I'm getting rewarded. मैं सोचता हूँ मुझे उससे ज्यादा मिलना चाहिए जितना मुझे मिल रहा है। I'm killing myself. मैं अपने आप को पूरा मार रहा हूँ। Haven't had a day off in 13 years. 13 साल में मैंने एक छुट्टी भी नहीं ली है। So naturally that's going to bring a doubt, isn't it? स्वाभाविक रूप से कुछ संदेह उत्पन्न होगा। But spiritual life is internal, not external. लेकिन आध्यात्मिक जीवन भीतरी है, बाहरी नहीं। Prabhupada says here, devotional service to the Lord and the Lord Himself are one and the same because they are spiritual. भगवान की भक्ति में सेवा और भगवान बिल्कुल अभिन्न है क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। So is our devotional service one and the same with Krishna? Means completely spiritual? क्या हमारा भक्ति में सेवा कृष्णा के साथ बराबर है? क्या ये पूरी तरह आध्यात्मिक है? Let me read that again. चलिए हम इसको फिर से पढ़ते हैं। Let's dive a little deeper. चलिए और थोड़ा गहराई में चलते हैं। Devotional service to the Lord and the Lord Himself are one and the same. भगवान की भक्ति में सेवा और भगवान एक हैं और अभिन्न हैं। Because they are spiritual. क्योंकि ये आध्यात्मिक है। Devotional service takes place within the internal energy of the Supreme Lord. भक्ति में सेवा भगवान के अंतरंगा शक्ति में कार्य करती है। So is our devotional service taking place within the internal energy of the Supreme Lord? लेकिन क्या हमारी भक्ति में सेवा भगवान की अंतरंगा शक्ति में कार्य कर रही है? Is this on soul transcendental platform? क्या ये आत्मा दिव्य स्तर पे है? Swarup Shakti platform? स्वरूप शक्ति के स्तर पे है? Shuddha Sattva platform? शुद्ध सत्व के स्तर पे है? That's devotional service. वो भक्ति में That's सेवा tattva है। vichar. वो तत्व विचार है। That's spiritual. वो आध्यात्मिक है। What are we calling our devotional service? हम अपनी भक्ति में सेवा को क्या कह रहे हैं? We think it's spiritual, right? It's for Krishna. हम सोचते हैं ये आध्यात्मिक है, ये कृष्णा के लिए है। But if we break it down, what is the quality and what is the quantity of that devotional service? And what is our motivation? लेकिन अगर हम इसको तोड़ कर देखेंगे तो हमारी गुणवत्ता कितनी है, मात्रा कितनी है हमारी भक्ति में सेवा की और उसका प्रेरणा क्या है? Is it to give pleasure to the senses of Krishna? क्या ये कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए है? Is that how we're doing our devotional service? क्या इसीलिए हम अपनी भक्ति में सेवा कर रहे हैं? And if we have contaminated mind, intelligence and senses, we don't even know Krishna. और अगर हमारा दूषित मन, इंद्रिय, बुद्धि है तो हम कृष्ण को जानते तक नहीं हैं। Isn't that what Krishna is saying? Unless you're free from all sin, you cannot know me. जब तक आप सारे पापों से रहित नहीं हो जाते आप मुझे जान नहीं सकते। Only by pure devotional service can you know me. सिर्फ शुद्ध भक्ति से तुम मुझे जान सकते हो। So what is our knowing Krishna and devotional service all about? तो हम जो इतना कृष्ण और भक्ति में सेवा के बारे में जानते हैं ये क्या है? Is that transcendental platform, internal spiritual energy of the Lord, quality of devotional service? क्या ये दिव्य स्तर पे है, भगवान के अंतरंगा शक्ति पे, उस गुणवत्ता पे, उस मात्रा में है? Or is that just apparent? या फिर ये बस बाहरी है? Apparently we're doing. बाहरी से बाहर एक तरीके से हम कर रहे हैं। So this is devotional service in tattva vichar, absolute conception, perception. ये भक्ति में सेवा है, तत्व विचार। That devotional service, bhakti, real bhakti, is none different than Bhagavan and Bhakta. और इस तरह की भक्ति अभिन्न है भगवान और उनके भक्त से। We can't say, okay, I don't know Bhagavan, I'm not really a Bhakta, but I'm doing bhakti. हम ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता भगवान कौन है, मैं भक्त हूँ या नहीं, लेकिन मैं भक्ति कर रहा हूँ। You don't know Bhagavan, we're not acting like Bhakta, but we're doing bhakti. भगवान को नहीं जानते हैं, हम भक्त के जैसा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं। And then we're not getting enough of a reward. और हमें पर्याप्त फल नहीं मिल रहा है। And we're doubting the whole thing. और हम पूरे चीज प्रक्रिया पे संदेह कर रहे हैं। That sounds like a problem. सुनने में कुछ समस्या लग रही है। It sounds like some possible misunderstanding could be there. ऐसा संभावना है कुछ गलतफहमी है।
Krishna in the verse before, he said, whoever knows me in truth, कृष्णा इसके पहले के श्लोक में बता रहे हैं, जो भी मुझे सत्य में जानता है, as the Supreme Personality of Godhead, परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, without doubting, बिना किसी संदेह के, he is the knower of everything, वो सभी चीजों का ज्ञाता है, and therefore engages himself in full devotional service to me. और इसलिए वो पूर्ण प्रेम में भक्ति सेवा में मेरे लगता है. So without purified mind, intelligence and senses, how can we hear Krishna enough to know Krishna? तो बिना शुद्ध मन बुद्धि इंद्रिय के कैसे हम कृष्ण को सुन सकते हैं और उनको जान सकते हैं? And how can we, if we hear from Krishna, then there's no doubting. और अगर हम कृष्ण से सुन पा रहे हैं तो कोई संदेह नहीं होगा. You think Krishna is going to tell you in such a way that you're going to doubt what Krishna is telling you? क्या आपको लगता है कृष्ण आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप पूरे चीज में संदेह करने लगेंगे जो आपको बता रहे हैं? Right? Are you trying to tell somebody in such a way like that they won't doubt you? क्या आप किसी को कुछ समझाने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके से नहीं बताएंगे कि आपको कोई संदेह ना हो? So Krishna is going to give you perfect knowledge from perfect source, but you're going to have doubts about it? तो कृष्ण आपको पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से देंगे और क्या आपको संदेह होगा उसमें? So it's such perfect knowledge from perfect source that the end result is you're doubting it? तो पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से जब आपको प्राप्त होगा तो अंत फल ये होगा कि आप उस पर संदेह करेंगे. That doesn't make any sense. उसका कोई मतलब नहीं बनता. So Krishna wants to give us intelligence and faith. That means without any doubt, because Krishna will kill the demons of doubt. अगर कृष्ण हमें बुद्धि श्रद्धा देना चाहते हैं बिना किसी संदेह के, यानी कि संदेह के असुर को वो खत्म कर देंगे. So Bhaktivinoda Thakur says you're overestimating your adhikar, your actual qualification. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं आप अपने स्वयं का अधिकार ज्यादा समझते हैं. Because of pride and falsiko. मिथ्या अहंकार और दंभ की वजह से. And because you're overestimating, your expectation is too high. और अपने आप का बहुत ज्यादा आंक रहे हैं तो आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है. We think, you know, I'm devoted. हम सोच रहे हैं I'm surrendered. I'm killing myself in the process. मैं शरणागत हूँ, मैं अपनी आप We're को doing पूरी तरह मार रहा devotional हूँ. service. We're chanting. We're doing everything. हम भक्ति में सेवा कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं. Prabhupada said we're all pure devotees. प्रभुपाद कह रहे हैं हम सब शुद्ध भक्त हैं. So why not the right results? Why are you not satisfied with the results? तो क्यों हमें सही फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं? क्यों हम सारे फलों से संतुष्ट नहीं हैं? So we never think, well, maybe I'm doing something wrong that I'm getting this type of results or lack of results. हम कभी ये नहीं सोचते हम कहाँ गलत हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं जिसके वजह से हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा है या कम फल प्राप्त हो रहे हैं. False ego pride says, no, I deserve much more. मिथ्या अहंकार और दंभ सोचता है नहीं, मुझे इसके ज्यादा के लायक हूँ And I'm not getting. और मुझे मिल नहीं रहा. So I'm doubting about Krishna. I'm doubting about this process. तो मैं कृष्णा में संदेह कर रहा हूँ, प्रक्रिया में संदेह कर रहा हूँ. I'm doubting about the Guru. मैं गुरु में संदेह कर रहा So हूँ. many doubts are there. बहुत सारे संदेह हैं. Doubts are like demons. संदेह असुर के जैसे हैं. Where are the doubts coming from? यह संदेह कहाँ से आते हैं? Maya. माया से. Means we're not hearing Krishna, we're hearing Maya. इसका मतलब हम कृष्णा को नहीं सुन रहे हैं, माया को सुन रहे हैं. If Krishna gives perfect intelligence and knowledge, there's no doubt. अगर कृष्ण पूर्ण ज्ञान पूर्ण बुद्धि देते हैं कोई संदेह नहीं होगा. That's why Krishna said, "Did you hear me, Arjuna, with an attentive mind?" इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बताया, पूछा कि क्या आपने पूरे ध्यान पूर्वक सुना? Are all your questions answered? Are all your doubts destroyed? क्या आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया? क्या आपके सारे संदेह नष्ट हो गए? And then Arjuna admitted that after hearing from you, my consciousness became completely purified. और अर्जुन ने स्वीकार किया कि आपसे सुनने के बाद मेरी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो गई. I regained my remembrance of who am I, what am I supposed to do. और मेरा स्मरण मुझे वापस मिल चुका है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने के लिए बना हूँ. Now my intelligence is fixed, I'm strong, I'm determined to follow your instruction. अब मेरी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, मैं दृढ़ निश्चय हो चुका हूँ आपके निर्देशों का पालन करने के लिए. Free from doubts. सारे संदेहों से मुक्त हो चुका Everything हूँ. is answered. सब कुछ उत्तर मिल चुका है. Now I'm prepared to fight. अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ. That was the end result of his hearing from Krishna. ये अंत फल हुआ जब उसने कृष्ण से श्रवण किया. But if we can hear from Krishna, लेकिन अगर हम कृष्ण से सुन नहीं सकते because of false ego, too high estimation of ourselves, अब मिथ्या अहंकार की वजह से और अपने आप को हम बहुत ज्यादा आंकते हैं, because of this contamination, false ego, इस दूषण से, इस मिथ्या अहंकार की वजह से, then we will be imperfect in our intelligence. तो हमारी बुद्धि अपूर्ण होगी.
And we'll go on, Prabhupada said, just simply speculating about the absolute truth. और प्रभुपाद बताते हैं हम सरलता से बस मनोधर्म करते रहेंगे परम सत्य के बारे में। But one who perfectly knows from Krishna, लेकिन जो पूर्ण रूप से जानता है कृष्ण without से, wasting valuable time, अपना कीमती समय नष्ट किए बिना engages directly in Krishna consciousness, सीधे सीधे कृष्ण भावनामृत में लगता है, in sincere and serious execution of devotional service to the Lord. और गंभीर और ईमानदारी से भगवान के प्रेम भक्ति में सेवा में लगता है। So Prabhupada said there's knowledge coming from Krishna, it's called Shruti. प्रभुपाद बताते हैं ये ज्ञान जो कृष्ण से आ रहा है इसे श्रुति कहा It's जाता है, received through submissive oral reception. जो प्राप्त किया जाता है विनीत भाव से श्रवण करके। And we should actually, Prabhupada said, receive the Vedic message from the authorities like Krishna and Krishna's representative in Parampara. और प्रभुपाद बताते हैं हमें ये वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कृष्ण और कृष्ण के प्रमाणिक परंपरा से। Then Krishna will distinguish everything very nicely for you. और कृष्ण सभी चीजों का बहुत अच्छे से समझाएंगे हमें। So you should hear from this source, from these sources. तो हमें इस तरह के स्रोतों से सुनना चाहिए। And again, Prabhupada said, just simply hearing like hogs and dogs is not sufficient. अब प्रभुपाद बता रहे हैं बस सरलता से सुअर की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। One must be able to understand from the authorities. किसी को योग्य होना होगा समझने के लिए अधिकारियों से श्रवण That's करना। why we're saying, if you just say, oh, I heard everything you said, बस हम कहते रहेंगे कि हाँ हमने सब कुछ सुना जो आपने कहा। right? Prabhupada says the hogs and dogs, they're also hearing everything. जो कुत्ते और सुअर है वो भी सब कुछ सुनते हैं, But are they understanding it? लेकिन क्या वो समझ पाते हैं? And is that understanding leading them to act on that understanding? और वो इतना समझ पा रहे हैं कि वो उस अपने समझ पे कार्य कर पा रहे हैं। Therefore, one must be able to understand from the authorities. इसलिए किसी को योग्य होना होगा अधिकारियों से समझ पाने के लिए। Not that we just go on simply speculating academically, theoretically. बस हम सरलता से मनोधर्म करते रहे शैक्षणिक आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे। Prabhupada said, anyone who's able to understand in this way, अब प्रभुपाद बता रहे हैं कोई भी अगर इस तरीके से समझ पाता है according to the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आधार he पे, will know perfectly the purpose of the Vedas. वो पूर्ण रूप से समझ जाएगा वेदों का उद्देश्य। And otherwise, no one else will know the purpose of the Vedas. और इसके अलावा कोई भी अन्य लोग वेदों के उद्देश्य को समझ नहीं पाएंगे। Prabhupada said in the Vaishnava Parampara, it is said that if one is engaged in devotional service of Krishna, there's no need for any other spiritual process for understanding the Supreme Absolute Truth. प्रभुपाद बताते हैं वैष्णव परंपरा में ये माना जाता है अगर कोई भगवान की भक्ति में सेवा में लगा है तो इसके अलावा और कोई अन्य प्रक्रिया नहीं है परम सत्य के बारे में समझने के लिए। So somehow or other we want to understand about Krishna, want to surrender and serve Krishna, then Krishna will send you bona fide guru and parampara. तो अगर हम किसी तरह से कृष्ण को समझना चाहते थे, कृष्ण को शरणागत सेवा करने का प्रयास करना चाहते थे, तो कृष्ण हमारे प्रमाणिक गुरु भेजेंगे जो One is परंपरा में है। sincere and serious to surrender to Krishna, Prabhupada said. अगर कोई ईमानदार गंभीर है कृष्ण को शरणागत करने के लिए, By प्रभुपाद the बताते mercy हैं, of Krishna, one gets such bona fide guru. तो कृष्ण की कृपा से किसी वजह से प्रमाणिक गुरु प्राप्त होते हैं। The mercy of such bona fide guru, he purifies and qualifies us and explains and helps us to understand how to execute Krishna's process of devotional service to qualify themselves. और उस प्रमाणिक गुरु की कृपा होती है कि वो हमें योग्य बनाते हैं और हमें शुद्ध कर पाते हैं कि हम उस कृष्ण के इस भक्ति में सेवा में लग सके, योग्य हो सके उस सेवा को कर पाने के लिए। So two mercies are required. तो दो कृपा की जरूरत है। How's our friend doing back there? He's all right? हमारे मित्र कैसे हैं आज? ठीक है वो? Are you liking this conversation? क्या आपको पसंद आ रहा है हमारी चर्चा? Without purification of this mind, intelligence and senses, we cannot understand this transcendental subject matter properly. बिना मन, बुद्धि, इंद्रिय के शुद्धिकरण के हम इस दिव्य स्तर के चतुर्थ आयाम की चीजों को नहीं समझ पाएंगे। Otherwise, we'll just try to do it through some academic approach or power of mental speculation. We'll have no real access there to understand it properly. अगर हम अपने शैक्षिक योग्यता के आधार पर मनोधर्म करके इसको समझने का प्रयास करेंगे, हमारे पास कोई असल योग्यता नहीं है उसको समझ पाने के। So without following Krishna's process of purification by surrendering and accepting bona fide guru, one cannot get free from sinful desire or sinful reaction. तो बिना अगर हम कृष्ण की प्रक्रिया, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को स्वीकार किए बिना, जिसका मतलब है कृष्ण के प्रतिनिधि को शरणागत किए बिना, गुरु को शरणागत किए बिना, हम सही तरीके से समझ नहीं सकते इस प्रक्रिया को। Do you understand what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? Right?
You're sleeping, whole time sleeping. आप सो रहे हैं, पूरे समय सो रहे हैं. You're getting old now, अब आप बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे, right? ठीक है? When you get old, you get more tired, isn't it? जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप ज्यादा थकते हैं. How old are you now? कितने उम्र है आपकी आप? 61. 61. 61 साल के हैं. He woke up at 2:30 a.m. today and he didn't take rest daytime. Acha. Acha. You're practically like a 6 Goswami. आप तो 6 गोस्वामियों के जैसे हैं. So I feel very honored that you waited from my class to finally catch up on your rest. तो मैं बहुत भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ कि आपने अंत में मेरे क्लास के समय में सोने का समय तय किया अपना. I hope my voice was very soothing for you and you could sleep nicely. मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आपको बहुत अच्छी लग रही थी ताकि आप बहुत आसानी से सो सकें. Right? Now he's got a little rest. He rebooted himself. Now he's ready to go to transcendental platform. तो इन्होंने बहुत अच्छा से अब आराम लिया है. अब अपने आप पूरे फिर से तैयार करें ताकि आप दिव्य स्तर पे आ सकें. अभी Now you have a couple years left in your life, right? अब आपके कुछ ही साल बचे हैं आपके जीवन के. Death can come anytime. मृत्यु किसी भी समय आ सकती है. So now you're gonna go through a process to learn Sanskrit. तो अगर आप इस प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं कि आप कैसे संस्कृत सीखेंगे. Acha. And then when you finally learn Sanskrit and they're putting you on the wooden logs to light the fire, what will be the value of your Sanskrit? तो जब आप अंत में संस्कृत सीख लेंगे और जब आपको मृत्यु की सैया में आपके लकड़ी पे आपको लिटा दिया जाएगा और लकड़ी पे आग जब लगाया जाएगा तो आपका संस्कृत का योग्यता वहाँ क्या काम देने वाला है. Maybe we'll have someone hold the sign, he just finished learning Sanskrit. हो सकता है हम वहाँ किसी को एक साइन लेकर खड़ा करके रखेंगे आपकी चिता के सामने कि हाँ इसने संस्कृत सीख लिया अभी कुछ समय पहले ही. And then everybody can little clap, you know. और सभी लोग वहाँ ताली बजा पाएंगे. And then they फिर इसके बाद आग लगा देंगे चिता में. then it's gone. फिर सब खत्म. It's worth it. Huh? It's worth it. It's worth it. It's worth it? I'm sure. It's Krishna says, huh? It's worth it. कृष्ण बता रहे हैं तो कि हाँ ये इसके लायक है. I'm just a little joking with you. मैं बस थोड़ा मजाक कर रहा हूँ आपके साथ. But the point here is that to understand really Sanskrit is the language of Krishna. It's the language of in the transcendental realm. लेकिन यहाँ सवाल ये है, बात ये है कि ये जो भगवान की भाषा संस्कृत ये दिव्य स्तर पे है, इसको असल रूप में समझ पाना. Just like Hare Krishna is non-different from Krishna. जैसे हरे कृष्णा भगवान से अभिन्न है. But if we don't have purified mind and intelligence, we cannot properly chant Hare Krishna. लेकिन अगर हमारी पर्याप्त शुद्ध बुद्धि या मन इंद्रिय नहीं है तो हम हरे कृष्णा सही से जप नहीं कर सकते. Because that holy name is on transcendental platform. Sanskrit means really transcendental platform. क्योंकि ये दिव्य नाम दिव्य स्तर पे है, यानी कि ये जो भगवान का ये संस्कृत नाम ये दिव्य स्तर पे है. So how can we understand Krishna and his language and what he's telling without mercy of Guru and Krishna? तो कैसे हम कृष्ण को समझ सकते हैं कृष्ण की भाषा बिना गुरु कृष्ण को कृपा को पाए बिना. We cannot understand it by an academic approach. हम इसको अपने शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं प्राप्त कर पाएंगे. Prabhupada says one must be able to understand from proper authorities. प्रभुपाद बताते हैं किसी को आपस से समझना होगा सही अधिकारियों से. It is not that one should simply speculate and try to understand academically, intellectually. कोई बस अपना मनोधर्म करके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर समझने का प्रयास नहीं कर सकता. So one has to hear from one who knows. तो उसको किसी को श्रवण करना होगा जो जानता है. Krishna's parampara, then by their mercy we can understand it. कृष्ण परंपरा और उनकी कृपा से फिर हम समझ पाएंगे. Prabhupada said if anyone after spending hundreds and thousands of lives does not come to this point that Krishna is Supreme Personality of Godhead and one has to fully surrender unto him. अगर कोई सैकड़ों हजारों जीवन के बाद भी इस बात को नहीं समझ पाता है कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और हमें उनको शरणागत करना चाहिए,
then all of his speculation for so many years and lives is a useless waste of time. तो उनके इतने सालों का मनोधर्म, इतने जीवन का मनोधर्म बस सरलता से समय की बर्बादी है. So we're very proud of our so-called intelligence and power of our mental speculation. तो हमें बहुत ज़्यादा गर्व है अपने शैक्षणिक योग्यता पे, अपने मनोधर्म पे. And we're overestimating our intelligence and faith. और हम ज़्यादा अपने आप को आंकते हैं, हमारे बुद्धि को और हमारे श्रद्धा को. Right? Even Lord Brahma could not understand. यहाँ तक कि भगवान भी ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए थे. But our power of our false ego and mental speculation will understand everything. लेकिन हमारे मिथ्या अहंकार में और हमारे मनोधर्म में हम सोचते हैं हम सब समझ सकते Just हैं. by studying the books. बस किताबों का अध्ययन करके. I used to have a godbrother. He had so many different books, spiritual books. मेरे गुरु भाई थे, उनके पास बहुत सारे आध्यात्मिक किताबें थी. He had books coming out of every pocket. उसके हर एक पॉकेट से किताब निकलती थी. So my Gurudev told him, he said, you see, you have so many granthas out there. मेरे गुरुदेव ने कहा, देखिए आपके पास बहुत सारे ग्रंथ हैं. Right? He said, you're like an ass. आप एक गधे के जैसे हो. You're just carrying around all the granthas on your back. आप बस अपने पीठ पे सारा ग्रंथ लेके ढोते रहते हैं. But you have no idea what's inside of the grantha and what it means. लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता है उस ग्रंथ के अंदर क्या है और उस ग्रंथ का मतलब क्या है. So you're just carrying like an ass, doing the work of an ass. तो आप बस गधे की तरह उसको ढो रहे हैं ग्रंथों को. Any questions? कोई सवाल? Yes, sir. Now that you're awake, अब आप जाग गए हैं. I had to shake you a little bit. मुझे इनको थोड़ा हिलाना पड़ा. Я много слушал лекции через английский и через русский язык. И это не самый чистый санскрит, то, что они говорят. Потому что носители другого языка не могут высказать чистый санскрит. Там, кроме слов, это есть еще эмоции, выражения и ударения. Чуть искажение, смысл меняется. В азербайджанском языке есть такой стиль, бхārata называется, стиль стихотворный стиль. И там в зависимости от слов, как в зависимости от предложения, смысл слов меняется. Есть такие тонкости выражений. Я вот ищу учителя чистого санскрита через не английский, не через русский, прямо санскрит Азербайджан, хинди Азербайджан. Тогда я много чего понимаю. Когда говорят чистый индус, значит без всяких там смесей, его очень легко понять. Так и же санскрит. Я это чувствую, я это читал, слышал от чистых источников и понял. И вот я это ищу. Shri Gurudev, I was hearing many classes in Russian language and English language, and they cannot explain like Sanskrit in pure way. And in Sanskrit it's so many like subtleties and emotions and different things. Do you understand Sanskrit on a transcendental, fourth dimensional, internal spiritual platform? क्या आप संस्कृत समझ सकते हैं दिव्य स्तर पे, चतुर्थ आयाम में भगवान के अंतरंगा शक्ति के जिस तरह कार्य कर रही है उस स्तर पे आप समझ पाते हैं? Which is non-different from Krishna. Do you understand it? जो कृष्णा से अभिन्न है, क्या आप उस तरह समझ पा रहे हैं? Текст, сказанный не носителем языка, и текст, сказанный носителем языка, они отличаются. Алфавитный запас английских и русских языков не отражает той тонкости чистого санскрита. Эти алфавиты, английский и русский алфавит, не в состоянии передавать эти тонкости звучания. А когда слушаешь от чистого источника, санскритолога, индуса, без всяких акцентов, смысл понятен.
if somebody don't know this language, Sanskrit language, he cannot actually explain it like in pure way. If somebody has only like English language or Russian language, he cannot explain it like. Yeah, but you didn't answer my question. लेकिन मैं आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया अभी तक. My question is, do you understand Sanskrit on Krishna's transcendental platform, which is Shuddha Sattva platform? Do you understand Sanskrit on that platform? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप संस्कृत को समझ पाते हैं दिव्य स्तर पे, चतुर्थ आयाम वाले स्तर पे, कृष्णा के स्तर पे, जो कृष्णा से अभिन्न है? Я не могу сказать, что я понимаю все на абсолютном уровне, но я сравниваю эти тексты трех вариантов и понимаю, что прямое сказанное более доходчив. I cannot say that I understand, but when I comparing somebody who speak Russian, English or Indian person who speak Hindi and Sanskrit, the Indian person, he is speaking more like accurate. But if the Indian is not a pure Vaishnava on transcendental platform, then he's not actually speaking Sanskrit in the purest sense of the word. लेकिन अगर वो भारतीय शुद्ध वैष्णव नहीं है और अगर वो संस्कृत बोल रहे हैं तो वो असल शुद्ध सत्व स्तर पे संस्कृत नहीं बोल रहे हैं जो कृष्णा के स्तर पे है. And even if you pronounce the Sanskrit properly, if you do not realize it on transcendental platform, then that is also materialistic. तो अगर आप संस्कृत बहुत सही उच्चारण से बोल पा रहे हैं लेकिन आप उसको दिव्य स्तर पे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप वो भी पूर्ण नहीं है. По крайней мере, слова ясны. At least words will be clear. Yeah, but it won't be transcendental. लेकिन वो दिव्य नहीं होंगे. शब्द भले साफ हों लेकिन दिव्य नहीं होंगे. There's many Hindi words which are the same as Sanskrit words. बहुत सारे हिंदी के शब्द हैं जो बिल्कुल एक समान है संस्कृत शब्दों से. Sometimes when I say Sanskrit word and word for word, right, he's telling exactly the same word. कभी-कभी मैं शब्द का अनुवाद करता हूँ और ये एक ही जैसे शब्द अनुवाद करते हैं जो संस्कृत और हिंदी में कहे. So that Hindi is coming from Sanskrit. तो हिंदी संस्कृत से आ रही है. And some of the words are actually same as Sanskrit words. और कुछ शब्द बिल्कुल एक समान है संस्कृत शब्द. So that means any Indian who's speaking, Hindi, because it's similar, same word as Sanskrit, then his Hindi word that is same as Sanskrit, that word is transcendental, that's on Shuddha Sattva transcendental platform. तो क्या कोई भी भारतीय व्यक्ति जो हिंदी बोल रहा है क्योंकि वो हिंदी के शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हैं तो क्योंकि उनके शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हैं तो क्या वो दिव्य स्तर पे हो जाएंगे? क्या वो चतुर्थ उस कृष्ण के स्तर पे आ जाएंगे? Doesn't it depend on his consciousness and his faith? क्या उनकी चेतना और उनका श्रद्धा के ऊपर निर्भर नहीं होता ये बात? Isn't that which makes it spiritual? क्या ये उसको आध्यात्मिक नहीं बनाता? Я сейчас на этом этапе, что еще технические стороны вопроса, о духовности потом разберусь. He says that now I'm at such a point that I want to learn technical part of this Sanskrit. Spiritual part I will figure out later. I have no words to say. मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए. Because you're so determined, I don't want to get in the way of your determination. क्योंकि आप इतना दृढ़ निश्चय है, मैं इनके दृढ़ निश्चय के बीच में नहीं आना चाहता. It's like the guy who, he's eating the banana, and then he just throws the banana away and he's just eating the peel, He said, eventually I'll get to the banana, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो केला खा रहा हो लेकिन केला के बस छिलके को खा रहा हो और केले को फेंक रहा हो, कह रहा हो कि मैं अभी छिलका खाऊंगा बाद में पता लगेगा केला क्या है. Right now I'm eating the peel, but later on I'll worry about the banana. अभी मैं छिलका खाऊंगा, बाद में मैं केला के बारे में सोचूंगा. This is my process. This is my truth. ये मेरा प्रक्रिया है, इस तरह ये मेरा सत्य है. So you're coming in this mood of submissive our reception to get mercy of Guru and Krishna. तो क्या आप इस भाव से आ रहे हैं कैसे विनीत भाव से श्रवण कर सके ताकि गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकें?
Well, you certainly didn't come to the right place if all you want is a materialistic understanding of Sanskrit. तो अवश्य आप किसी सही जगह पे नहीं है अगर आप भौतिक समझ पाना चाहते हैं बस संस्कृत के बारे में। I can't even say one shloka properly. मैं तो एक श्लोक भी ठीक से बोल नहीं सकता हूँ। I'm just hoping that Krishna sees some little sincerity there, you know. मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि कृष्णा कहीं में थोड़ी ईमानदारी को देख पाए। I'm just banking on that, you know. मैं तो बस उसी पे निर्भर हूँ। Кришна не препятствует желаниям человека. It's like from the grave, you know. Свободен в своем желании и в своем выборе. From the ashes. ऐसा जैसे कब्र से या राख से निकल रही है। Кришна не ставит препятствия желаниям человека, он свободен выбирать. If somebody desires something, Krishna is not on the way of fulfilling desires of. Yes, the hogs are also desiring something. हाँ, सुअर का भी बहुत सारी इच्छा होती है। They like stool, उनको विष्ठा खाना पसंद होता है। so Krishna doesn't disturb them. तो कृष्णा उनको परेशान नहीं करते। You can't go to the hog and say, "Here's a rasgulla," you know. आप सुअर के पास जाकर नहीं कह सकते ये बहुत अच्छा रसगुल्ला है। He's looking for some other kind of food. वो दूसरे तरीके का खाने का चीज ढूंढ रहा है। Maharaja, в Азербайджане нету нормальных книг. Очень мало книг на азербайджанском языке, и мы в этом нуждаемся. Like a phoenix from the ashes. Yes. He says that in Azerbaijan there is no good books. We need really good books. Really good books to light the fire. ताकि आग प्रभु बोल रहे हैं कि हमारे देश में कोई अच्छी किताबें नहीं तो गुरुदेव बता रहे हैं क्यों चाहिए किताबें आग लगाने के लिए उसके ऊपर। This is the best book. ये सबसे श्रेष्ठ किताब है। Они не на азербайджанском языке. They are not in Azerbaijan language. Is it being translated properly to you? Bhagavad Gita is being translated properly? क्या भगवद गीता का अनुवाद सही तरीके से किया गया है आपके लिए? Идет процесс. It's in the process. The book or you? कौन प्रक्रिया में किताब या फिर अनुवाद प्रक्रिया Or में combination? या दोनों का मिश्रण? Разве Кришну на своем языке читать и писать? Разве Кришну на своем языке писать и читать? Да. He's saying, is it sinful to read? In what? Is it sinful to read and to write in your mother language? Are you writing swear words? क्या आप गंदी बातें लिख रहे हैं? गुरुदेव प्रभु सवाल पूछ रहे हैं क्या ये गलत है अपनी भाषा में चीजों को अनुवाद करना उसको लिखने का? Or क्या ये पाप are है? you writing about Krishna? तो गुरुदेव बता रहे हैं क्या आप गंदी बातें लिख रहे हैं या फिर कृष्णा के बारे में? Do you think Krishna doesn't speak, how do you say, Azerbaijan? क्या आपको लगता है कृष्णा अज़रबैजान बात नहीं कर पाते हैं भाषा? You believe Krishna is in your heart, right? आप मानते हैं कृष्णा आपके हृदय में है। So is Krishna speaking, when Krishna is speaking to you, what language does he speak to you in? तो जब कृष्णा आपसे बात करते हैं वो आपसे कौन सी भाषा में बात करते हैं? When he's inspiring you जब आप आपको प्रेरणा to देते हैं surrender to him, ताकि आप उनको शरणागत करें, what language is he speaking to you? कौन सी भाषा आपसे बात करते हैं वो? Он параматма. Ему не нужны переводчики. He is Paramatma, he don't need translators. But what language does Krishna in your heart, what language does he speak to you? गुरुदेव सवाल पूछ रहे हैं परमात्मा जो आपके हृदय में है कौन सी भाषा में आपसे बात करते हैं? Krishna says, I'm in the heart of everyone. Krishna From me comes knowledge and intelligence. So that intelligence that Krishna, knowledge and intelligence that Krishna in the heart is giving, when he's explaining to you, what language is he speaking to you? तो कृष्णा सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, उससे सारा ज्ञान और बुद्धि आती है। तो जब आपको कृष्णा किसी तरह की बुद्धि किसी तरह की ज्ञान देते हैं तो कौन सी भाषा में आपको दे रहे होते हैं? When he spoke to Arjuna, he spoke in Sanskrit. जो वो अर्जुन को बता रहे थे उन्होंने संस्कृत में कहा।
Because Arjuna knows Sanskrit. क्योंकि अर्जुन संस्कृत जानते हैं, That's his mother tongue. उसकी मातृभाषा है। So Krishna in your heart, Paramatma, Super Soul, right? When he give you intelligence and knowledge, what language is he speaking to you? तो कृष्णा परमात्मा जो आपके हृदय में स्थित हैं, जब वो आपको बुद्धि ज्ञान देते हैं, कौन सी भाषा में देते हैं? Азербайджанский. Azerbaijan language. That's my point. यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। So अज़रबैजान if भाषा। Krishna knows how to communicate with you, then that communication is 100% pure. It's 100% transcendental because it's coming directly from Krishna himself. अगर कृष्णा आप जानते हैं आपसे कैसे संपर्क करना है, तो ये संपर्क पूरी तरह से दिव्य है, पूरी तरह से दिव्य स्तर पे है, क्योंकि ये कृष्णा से संबंधित है ये संपर्क। Because he cannot generate material vibration. क्योंकि कृष्णा भौतिक शब्द तरंग उत्पन्न नहीं करते। So it's not about language, it's about the source of the language, the source of the knowledge and intelligence. Is it coming from Krishna or is it coming from Maya? That's really the question. तो सवाल यहाँ भाषा का नहीं है, सवाल ये है कि वो भाषा किस स्रोत से आ रही है, वो ज्ञान बुद्धि वो कृष्णा से आ रही है या माया से आ रही है। That's what makes it spiritual. ये उसको आध्यात्मिक बनाता है। Нигде в ведических писаниях не говорится о переводчиках. In Vedic scriptures, there is no, like, Vedic scriptures are not mentioning about any translators. Well, how will everybody understand Krishna's words unless it's translated by Krishna's pure devotee? तो प्रभु बता रहे हैं वैदिक शास्त्रों में कहीं भी अनुवादक का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं कैसे ये दिव्य ज्ञान दिया जा सकता है अगर उनके शुद्ध भक्त उनको अनुवाद नहीं करेंगे। Why did Srila Prabhupada translate all of the Sanskrit teachings and all the different books into English and other languages for people from other countries around the world? Why were all these translations put there so that we could begin to understand what are Krishna's instructions? तो फिर क्यों श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद करवाया श्रीमद् भगवद गीता का, ताकि अनेक भाषाओं के लोग इसको समझ सकें, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकें। But we must hear from pure devotee, लेकिन हमें अवश्य शुद्ध भक्त से सुनना होगा, who knows Krishna, जो कृष्णा को जानता है, and understands Krishna. कृष्णा को समझता है, Then they can explain it to us. और वो हमको समझा सकते हैं। A lot of Sanskrit scholars, they don't even know who and what is Krishna. बहुत सारे संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं है कौन है क्या है कृष्णा। Even they're reading Krishna Sanskrit in the Bhagavad Gita and coming to the wrong conclusion. यहाँ तक कि वो कृष्णा का संस्कृत भगवद गीता पढ़ते हैं, लेकिन वो गलत निष्कर्ष पहुँचते हैं। So what is the value of their Sanskrit scholarship? तो उनके संस्कृत के विद्वान होने का क्या महत्व है? If Krishna doesn't reveal himself and you don't understand Krishna's instructions, what is the value of your Sanskrit academic approach? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कृष्णा क्या कह रहे हैं या कृष्णा क्या बताना चाहते हैं, कृष्णा के क्या निर्देश हैं, तो क्या महत्व है आपके इसके संस्कृत के विद्वता का? It's useless. बेकार है। Я не отвергаю философию, нам нужна чистая терминология. I agree with the philosophy, but we need pure terminology. What is it? Like, he agreed with the philosophy, he agreed, but he said we need pure, like, terminology, like, pure... Absolutely. No. Purity is the force, otherwise Krishna doesn't manifest. Then how will those words, unless they're pure and empowered, how will those words purify your consciousness and give you sufficient intelligence and faith? तो प्रभु पूछ रहे हैं कि अवश्य जो मैं सिद्धांत से सहमत हूँ, लेकिन उसका अनुवाद जो है शुद्ध रूप में होना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं अवश्य उसका अनुवाद शुद्ध रूप में होना चाहिए। अगर शुद्ध भक्त उसका अनुवाद करेंगे शुद्ध तरीके से, तो उस तरह से प्रकट हो गए कृष्णा वहाँ पे, और वो हमें पर्याप्त बुद्धि श्रद्धा दे पाएंगे उस अनुवाद में, इसलिए वो शुद्ध होना जरूरी है। So one must be pure, but one must also be empowered by Krishna parampara. तो उसको शुद्ध होना चाहिए, लेकिन उसको सशक्तिकरण भी प्राप्त होना चाहिए कृष्णा परंपरा का, उस अनुवाद को।
Otherwise, Krishna will not enter into those words, वरना कृष्णा उन शब्दों में प्रवेश नहीं करेंगे उस अनुवाद में। and therefore you'll not get the effect of that hearing process. और इसलिए आपको प्रभाव नहीं हो पाएगा उस श्रवण की प्रक्रिया में वहाँ। Purity is the force, Prabhupada said, प्रभुपाद कहते हैं शुद्धता में ही बल है, and one must be authorized and empowered from Krishna, Krishna's parampara. और अवश्य किसी को अधिकार प्राप्त करना होगा, सशक्तिकरण प्राप्त करना होगा कृष्णा कृष्ण परंपरा का, Otherwise, Krishna will not manifest. वरना कृष्णा वहाँ प्रकट नहीं होंगे। Then it's just theoretical, academic, just falsifico platform. तो फिर ये बस मौखिक, शैक्षणिक और मिथ्या अहंकार के स्तर पे होगा। Люди приходят, уходят, где-то остаются. People coming and going and Vedas remaining. What? People are coming and going, but Vedas, Shastras, it's remaining. Are we going to remain with the Vedas, or we're going to just come and go? तो वो प्रभु बता रहे हैं, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन वेद वहीं के वहीं हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि हम भी वहीं रहेंगे या हम भी चले जाएंगे। Are we going to try to follow the eternal scriptures, the eternal intelligence and faith from Krishna spoken in the Vedas or not? That's the question. सवाल ये है कि उनके अंदर जो नित्य निर्देश हैं और कृष्ण के साथ हम उसको नित्य रूप में पालन करना चाहते हैं, उनके साथ में रहना चाहते हैं या नहीं, श्रद्धा के साथ। We cannot make up our own way, our own path. हम खुद का तरीका, खुद का रास्ता तैयार नहीं कर सकते। We must follow Krishna, Krishna parampara, their example and their instructions. हमें अवश्य कृष्ण परंपरा को पालन करना होगा, उनके उदाहरण, उनके निर्देशों को। And if we can't hear it and don't understand it, how we'll follow it? अगर हम उसको सुनेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, कैसे हम उसका पालन करेंगे? Are you happy? क्या आप खुश हैं? В материальном мире нет полного счастья. In material world, there is no complete happiness. So are you in the spiritual world or the material world? वो बोल रहे हैं भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है। तो गुरुदेव पूछ रहे हैं आप भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में हैं? Это Кришна знает. Krishna knows. But do you know? वो बोल रहे कृष्णा जानते हैं, लेकिन गुरुदेव पूछ रहे हैं आप जानते हैं क्या? Maharaja, нам эти книги нужны. Maharaj, we need these books. That's why we're trying to explain to you these books. वो बोल रहे हैं हमें इन किताबों की जरूरत है। तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं इसीलिए तो हम इन किताबों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। But the books are called Shruti, means it has to be heard. लेकिन इन किताबों को श्रुति कहा जाता है, इसका मतलब इसे सुनना चाहिए किताबों को। Before this Kali Yuga, there was no books. इन कलयुग से पहले कोई किताब ही नहीं थी। This knowledge was passed simply by speaking and submissive oral reception hearing from bona fide source. इस ज्ञान को सीधे सीधे भेजा गया आगे शुद्ध स्रोत से बोल के और श्रवण करके प्रामाणिक स्रोतों के द्वारा। That's why it's called Shrota Parampara, means hearing in disciplic succession. इसलिए इसको श्रोत परंपरा कहा जाता है, श्रवण करना सही शिष्य गुरु परंपरा में। So the books must be heard तो इन किताबों का अवश्य सुनना from one चाहिए, who realizes it. जिसने इसका साक्षात्कार किया है। Then by their mercy we can understand it. और फिर उनकी कृपा से हम समझ सकते हैं, Not by reading, पढ़कर नहीं, not by academic study. हमारे शैक्षणिक योग्यता पे नहीं। Process is submissive oral reception from right source. प्रक्रिया है विनीत भाव से श्रवण करना सही स्रोत से। That's the process. ये प्रक्रिया है, That's what the Shastra says. ये शास्त्र कहते हैं। I'm not making something up. मैं खुद से कुछ नहीं बना रहा, That's what the book says. यही किताब में कहा है, To do like that. इस तरह से करिए। Одно другого не исключает. Like you can do both. What? First you have to hear it, then once you hear it and you understand it, then when you read it, then you remember what you heard. पहले आपको अच्छे तरीके से सुनना होगा, इसका साक्षात्कार करना होगा, फिर जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको स्मरण आएगा पूरा जब आपने सुना था उसको। But if you don't hear it
from Krishna parampara, you won't understand it properly, so your reading will not, the Bhagavatam, the Shastra will not reveal itself to you because it's revealed through hearing. तो अगर आपने इसको कृष्ण परंपरा से नहीं सुना है, आपने इसका साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया है, तो बस सरलता से श्रीमद् भागवतम ये शास्त्र आपके सामने प्रकट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रकट होता है श्रवण के माध्यम से। Prabhupada says factually the path of bhakti is the path of hearing. प्रभुपाद कहते हैं असल में भक्ति का मार्ग श्रवण का मार्ग है। Then once we hear properly, get mercy of Guru Krishna, then we can understand it, then we can read it and be reminded of what we heard and what we came to understand. तो अगर हम श्रवण करेंगे और गुरु कृष्ण की कृपा से हम उसको समझ पाएंगे, साक्षात्कार कर पाएंगे, तब जब उसको पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे असल में उसने क्या चीजें बातें लिखी हैं। Then that reading is valuable. तब वो हमारा अध्ययन महत्वपूर्ण है। But Prabhupada said, but if you just read independently, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं अगर आप स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे, you will definitely misunderstand. अवश्य आप कुछ गलत समझेंगे। Prabhupada gives the example like all the books, if you want to be a brain surgeon, all of the books are in the college bookstore. प्रभुपाद बताते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे आप एक ब्रेन सर्जन बनना चाहते हैं, बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं किताब की दुकानों में ब्रेन सर्जन बनने के लिए। You can't just go get all the books and read all the books and then you're going to become a brain surgeon. ऐसा नहीं कि आप सारी किताबें खरीद के सारी किताब पढ़ लेंगे और आप ब्रेन सर्जन बन जाएंगे। You have to learn and hear from and practice under someone who knows what it means, and then he's referring to the book at the same time. आपको उस व्यक्ति से सुनना होगा, उसके साथ रह के अभ्यास करना होगा, उसके साथ सीखना होगा, फिर वो आपको समझाएंगे कैसे इसको किया जा सकता है, तब आप उन किताबों के माध्यम से आपको सिखाएंगे, तब आप समझ सकते हैं। That's process of gaining knowledge, proper knowledge and being authorized. और ये सही प्रक्रिया है ज्ञान प्राप्त करने का, इस आधिकारिक ज्ञान प्राप्त करने का। И что предлагает мне отказаться от своего языка? He has to meet Ishwaranath. इनको ईश्वरनाथ से मिलाने की जरूरत है। They're like, brothers from a previous life. ये पिछले जन्मों के भाई जैसे हैं। It's amazing. अद्भुत है। Isn't it? It's like the Russian version and the Azerbaijan version. एक रशियन वर्जन है, एक अज़रबैजान वर्जन है। We have one friend of ours. You're very similar. हमारे एक मित्र हैं, बहुत आपके जैसे ही हैं। So what was he saying? तो क्या कह रहे थे वो? He's saying that, so you are telling me to reject my mother language? Did I say that? वो बता रहे हैं, यानी कि आप मुझे कह रहे हैं मुझे अपनी मातृभाषा को त्याग कर देना चाहिए। तो गुरुजी बता रहे हैं मैंने ऐसा कब कहा? Do you know any other language? क्या आप उसके अलावा कोई और भाषा जानते हैं? What language do you know? और कौन सी भाषा जानते हैं? Russian. रशियन जानते हैं। Azerbaijan. अज़रबैजान। Я с вами говорю на русском языке, у меня есть свой язык азербайджанский. He knows Russian language and Azerbaijan language. So Krishna is going to use those two languages to explain everything to you. प्रभु बता रहे हैं मुझे बस रशियन भाषा अज़रबैजान भाषा पता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कृष्णा उन्हीं दो भाषा का इस्तेमाल करेंगे आपको कुछ समझाने के लिए। But he's going to do it in a spiritual, purified way. लेकिन वो उसको करेंगे आध्यात्मिक रूप में, शुद्ध रूप में करेंगे। Prabhupada said, just like a microphone, right? It's material. प्रभुपाद जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे ये माइक्रोफोन है, ये भौतिक वस्तु है। But if you use it to explain about Krishna consciousness, then the microphone then becomes spiritualized. लेकिन प्रभुपाद बताते हैं जब आप इस माइक्रोफोन का इस्तेमाल करेंगे कृष्णा भावनामृत का प्रचार करने के लिए, तो ये माइक्रोफोन आध्यात्मिक बन जाएगा। So what is the consciousness and the motivation? That's what makes it spiritual. तो क्या चेतना है, क्या उद्देश्य है, वो उसको आध्यात्मिक बनाता है वस्तु को। На практике я использовал и проверял, что без посреднических языков прямой перевод более эффективен, не то что с перевода перевод. In my practice, I have practical experience that when you reading directly, like some language is more effective when it was translated. Then keep reading. तो बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है जब मैं पढ़ता हूँ, जब उसका अनुवाद मैं पढ़ता हूँ अपनी भाषा में, तो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। Whatever inspires you to want to surrender to Krishna, then just keep doing that. जो भी आपको प्रेरित करता है कृष्णा को शरणागत करने के लिए, आप उसको करते रहिए।
That's all right. तो ये ठीक है. All right? ठीक है. Okay. Mataji, you have a question? माता जी आपका सवाल है. Hare Krishna, Srila Gurudev. So, Srila Prabhupada, he said one last thing. Srila Prabhupada said out of hearing and reading, both of them are good. But out of the two, Srila Prabhupada says hearing is better and more effective. श्रील प्रभुपाद ने बताया है श्रवण करना और पढ़ना दोनों अच्छा है, लेकिन दोनों में श्रवण करना ज्यादा बेहतर है और ज्यादा प्रभावकारी है. That's Prabhupada instruction. ये प्रभुपाद का निर्देश है. Hare Krishna. So, if a disciple is completely materialistic, how Then he's can not disciple. मान ली सवाल पूछ रही है, अगर कोई भक्त पूरी तरह शिष्य कोई पूरी तरह भौतिक है तो गुरुदेव बता रहे तो फिर वो शिष्य ही नहीं है. That means you're a disciple of Maya. यानी कि आप माया के शिष्य हैं. obviously? So, is there any chance that he can be a Sat Shishya? Like, how he can be a Sat How do you go Shishya? from being a perfect servant of Maya to such Shishya? तो कैसे आप एक पूर्ण शिष्य माया के ना बन के आप पूर्ण शिष्य बन सकते हैं कृष्ण के? Right now, we're such Shishya from Maya. अभी सत शिष्य हैं माया के. So you got to turn it around, isn't it? तो हमें इसको You got उल्टा to करना start होगा. somewhere, तो शुरुआत कहीं से तो करनी होगी. right? So start with process of purification. तो शुरुआत कीजिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया से. Try to get rid of all of these nasty things. इस सारी गंदी चीजों से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास कीजिए. Purify consciousness. शुद्ध चेतना में Cleanse heart, mind, senses. शुद्धिकरण कीजिए हृदय मन चेतना का. Try to become more simple, more pure, ज्यादा सरल ज्यादा शुद्ध बनने का प्रयास so कीजिए, that we can hear better and be able to develop more faith ताकि हम सही तरीके से सुन सकें और ज्यादा श्रद्धा प्राप्त कर सकें. and understanding of what we need to do to advance in Krishna consciousness and please Krishna. ताकि हम समझ सकें हमें क्या जरूरत है भक्ति में उन्नति करने के लिए और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए. So we have to make a decision. We want to be servant of Maya or servant of Krishna. हमें फैसला लेना होगा, माया के सेवक बनना चाहते हैं या कृष्ण के दास बनना You want चाहते to serve in Maya's family or you want to serve in Krishna's family? हैं. आप माया के परिवार में सेवा करना चाहते हैं या कृष्ण के परिवार में सेवा करना You चाहते want to please Guru and Krishna or do you want to please Maya's family? हैं. आप गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं या माया के परिवार को प्रसन्न करना Who you're चाहते trying हैं. to please? आप Who you're किसको trying to serve? किसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, किसकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सवाल है. Is it spiritual or is it materialistic? ये आध्यात्मिक है या भौतिक? Prabhupada said if we're practicing nicely, understanding nicely, we should become more and more happy. प्रभुपाद बताते हैं अगर आप सही से अभ्यास कर रहे हैं, सही से प्रयास कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा खुश होंगे. If we just do austerity and jnana, our heart will become hard like stone. अगर हम बस तपस्या करेंगे, ज्ञान इकट्ठा करेंगे तो हमारा हृदय पत्थर के जैसा सख्त बन जाएगा. And we'll only develop pride and false ego. और हम बस मिथ्या अहंकार और दंभ प्राप्त करेंगे. So bhakti means it makes your heart more and more soft, you become more and more peaceful, more happy. भक्ति का अर्थ है आपको और ज्यादा शुद्ध बनेगा, शांत बनाएगा, आपको और ज्यादा कोमल बनाएगा, हृदय को और कोमल बनाएगा. Jnana will make you very hard, very like stone. ज्ञान आपको बहुत सख्त पत्थर के जैसा मजबूत बना देगा. Then no food for the soul, आत्मा को कोई भोजन नहीं मिलेगी, no softness. कोई कोमलता नहीं है. All right? ठीक है. Question? Yeah? How can a fallen conditioned soul understand about the nature of the absolute truth? कैसे कोई बद्ध जीवात्मा परम सत्य के बारे में समझ सकता है? So the question is, if I'm a conditioned soul, The question is, if I'm a conditioned soul, How do I? Yeah. See what I'm saying? so that means my faith and intelligence also under the modes of nature. Yeah. So then, if I offer a prayer, then If you what? offer a prayer. Offer a prayer? yeah, like if I offer such prayer on material platform, then how will Krishna actually like accept it? He won't.
तो वो सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम भौतिक हम बद्ध जीवात्मा हैं और हमारा बुद्धि और श्रद्धा दूषित है, प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो कैसे कृष्णा हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, कृष्णा नहीं करेंगे। He says, if one offers me with loving devotion, if that's your desire, then I'll accept it. कृष्णा कहते हैं, अगर कोई प्रेम और भक्ति से मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। So how much is our desire to offer with loving devotion? तो हमारी इच्छा कितनी है कि हम प्रेम और भक्ति से अर्पण करना चाहते हैं? How sincere and serious is it? कितने ईमानदार और गंभीर हैं हम? That's between you and Krishna. ये आपके और कृष्णा के बीच है। So become convinced and convince Krishna, then you'll start devotional service. तो आप खुद आश्वस्त होइए, कृष्णा को आश्वस्त कीजिए, तब आप भक्ति में सेवा शुरू कर पाएंगे। Make sense? मतलब बनता है? So when you ever offer prayer and you're thinking about something else and you realize, like, I just offered a prayer, I didn't even think about Krishna, and even while offering the prayer, you're not thinking about Krishna. जब आप कुछ प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कृष्णा को और फिर आप किसी अन्य भौतिक चीज के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ तक कि जब आप प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं उस समय भी कृष्णा के बारे में चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। There was so much mental speculation in the middle of the prayer, we forgot we were offering a prayer. हम इतने ज्यादा हमारी बुरी लत लगी हुई मनोधर्म करने की, हम कुछ प्रार्थना अर्पण करते हैं, प्रार्थना अर्पण करने के बीच में ही हम भूल जाते हैं कि वो हम कुछ प्रार्थना अर्पण कर रहे थे। We didn't even finish the sentence. We were speculating some other thing, you know? हम अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाते और हमें तुरंत हमारा मनोधर्म शुरू हो जाता है बीच में। And then after it's like, did I offer a prayer? और उसके बाद सोचते हैं, मैंने कुछ प्रार्थना किया क्या? And then we say, yeah, I think I did offer a prayer. और फिर सोचते हो, हाँ, शायद कुछ प्रार्थना किया मैंने। So Krishna definitely must have accepted that. तो अवश्य कृष्णा ने स्वीकार कर लिया होगा। At least half of it. उसे आधा तो स्वीकार किया होगा। Whatever portion of it was sincere and serious before you blacked out. जितने मात्रा में उसको ईमानदार और गंभीर था, जो उससे पहले कि आप पूरी तरह से उससे बाहर न निकल गए, पूरे अंधेरे में न चले गए। Krishna takes the essence, right? कृष्णा सार को ग्रहण करते हैं। You meant well, he took that, you just didn't finish the prayer, you know? अब आपने प्रार्थना आप पूरा नहीं कर पाए, सही मतलब से आप कर रहे थे। Because one day you'll finish the prayer. किसी एक दिन आप शायद प्रार्थना पूरा कर पाएंगे धीरे-धीरे। So whatever you do sincerely, Krishna will take it. तो जो भी आप ईमानदारी से ग्रहण अर्पण करेंगे, कृष्णा उसको Even if ग्रहण it's not करेंगे। complete. हो सकता है वो पूरा नहीं भी हो। That's why Krishna says, better you do your own service, even imperfectly. इसलिए कृष्णा कहते हैं, आप अपनी सेवा करने का प्रयास कीजिए, बेहतर हो सकता है आप उसको अपूर्ण तरीके से करें। Then try to do somebody else's service perfectly. किसी और की सेवा करने के बजाय हो सकता है आप उसको पूर्ण तरीके से भी करें। Yeah. Anything else? और कुछ? One more. How does a conditioned soul, under the modes of material nature, कैसे कोई बद्ध जीवात्मा जो प्रकृति के गुणों के अधीन है, with the Himalayan mountains of unlimited filth हिमालय पर्वत जैसा असीमित गंदगी भरा हुआ है and garbage, और कचरा, how can they understand कैसे समझ पाएगा वो the holy Dham? पवित्र धाम के बारे में? No? Is that the question? क्या ये सवाल है? What's the question? सवाल क्या है? So the question is, there is hearing and there is kirtan. So what is kirtan? There is hearing and then there's kirtan. Let's define what kind of hearing and let's define what kind of kirtan. तो सवाल पूछ रहे हैं, बात किया जाता है श्रवण का और उसके बाद कीर्तन का। तो गुरुदेव बता रहे हैं, चलिए पहले हम ये तय करते हैं किस तरह का श्रवण का और किस तरह का कीर्तन का बात किया Is जा it रहा है। hearing like the cats and the dogs? श्रवण है कुत्ते और बिल्ली के जैसा श्रवण, या फिर Is it Maya kirtan or Krishna ये kirtan? माया कीर्तन है या कृष्णा कीर्तन? Then? फिर So the question is, what is kirtan? What is kirtan? सवाल ये है कि कीर्तन क्या है? It's crying to Krishna, please engage me in your pure devotional service. कृष्णा के सामने रोना, कृपया मुझे अपने शुद्ध भक्ति में लगाइए। Please pick me up, please engage me. I don't want to be servant of Maya anymore.
मुझे उठाइए, मैं और माया का दास नहीं बने रहना चाहता। I want to surrender to you, serve you. मैं आपको शरणागत करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। Prabhupada said, like baby crying for the mother. प्रभुपाद बताते हैं जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है, That's how we should be chanting. इस तरह से हमें जप करना चाहिए, Crying mood. रोने के भाव में। Not necessarily mood of separation, because that's advanced platform. विरह के भाव में नहीं, क्योंकि वो बहुत उच्च स्तर है। More crying that where's Krishna and where are we? इस बात के लिए ज्यादा रोना, हम कहाँ हैं और कृष्णा कहाँ है। We're just rotting here, suffering under the modes of material nature, all of the threefold miseries in material world. हम बस सड़ रहे हैं यहाँ भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन, दुख भोग रहे हैं इस कष्टमय जगत में, And being punished और हमें दंड दिया with जाता the है। heavy lashes of Maya. माया कड़ा कड़ा प्रहार कर रही है, So how much we're going to tolerate of that? तो कितना ज्यादा हम उसको सहन कर पाएंगे। Then we had enough, then we'll think, okay, I better surrender to Krishna. जब हम पर्याप्त दंड पा लेंगे तो हम सोचेंगे हाँ मुझे बेहतर होगा कृष्णा को शरणागत करूं। Then said the prayer, Prabhupada explained the chanting Hare Krishna Maha Mantra, it's a prayer of deliverance. Please pick me up, please engage me in your loving devotional service. और श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये जप, ये एक तरह का प्रार्थना है, एक तरह का रोना है कृष्णा से, कृपया मुझे मुक्त कीजिए, मुझे इस दुखमय स्थिति से बाहर निकालिए। So internal kirtan or is japa. तो भीतरी कीर्तन जप कहते हैं उसको। External is for other people to hear also holy name and to purify the mind and senses and try to remember that they should also surrender and serve Krishna. और जब बाहरी रूप से कीर्तन करते हैं ताकि बाहरी के लोग भी इसको सुन सके, उनको भी शुद्धिकरण प्राप्त हो सके, उनको भी प्रेरणा प्राप्त हो सके, उनको भी शरणागत करना चाहिए कृष्ण को, सेवा करनी चाहिए उनकी। That's Sanatan Dharma. वो सनातन धर्म है, That's bhakti. वो भक्ति है। Means Sanatan Dharma. उसका मतलब है सनातन धर्म। Real Dharma means bhakti. असल धर्म का मतलब है भक्ति। Alright? ठीक है, Any last thing? कोई आखिरी चीज? Anybody? We're good? हम ठीक हैं? My brother, Azerbaijan, you're good? रुझान आप ठीक हैं? Are you becoming happy? क्या आप खुश हो रहे हैं? My goal in life is to make you happy. मेरे जीवन का लक्ष्य है आपको कैसे मैं खुश बना सकूं। That's my single purpose with you, how to make you as happy as possible. यही एकमात्र मेरा आपके लिए उद्देश्य है, कैसे मैं आपको जितना ज्यादा सुखी बना सकूं। For me, happiness is to be myself. Who are you? Who exactly are you? प्रभु बता रहे हैं मेरे लिए सुख का मतलब है जब मैं स्वयं के रूप में हूँ हमेशा। Are you some yogi from Azerbaijan? तो मुझे बता रहे हैं आप कौन हैं? आप कोई योगी हैं अजरबैजान के? Were you living in a cave over there? क्या आप किसी गुफा में रहते थे वहाँ? Did they have to pull you out of there to bring you to Mayapur? तो आपको क्या वहाँ से खींच के निकालना पड़ा मायापुर लाने के लिए? We brought you into the light. हम आपको रोशनी में लेकर आए। See, he's smiling already. देखिए बाबा, ये We're making progress. उन्नति कर रहे हैं। This is very good. बहुत अच्छा संकेत है। If you come every day, you'll be really happy, I promise you. अगर आप प्रतिदिन आएंगे आप बहुत खुश होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। Step by step. कदम कदम धीरे धीरे क्रमानुसार। Because finally, we tell everybody, unless you're happy or you want to be happy, you can't come. क्योंकि हम अंत में कहते हैं अगर आप खुश होना चाहते हैं और आप खुश हैं तभी आप यहाँ आ सकते हैं। So no unhappy people are allowed to come here. कोई भी दुखी आदमी यहाँ आने के लिए उनको अनुमति नहीं है। And if you're a little unhappy but you want to be happy, then you can come. लेकिन अगर आप दुखी हैं लेकिन आप खुश होना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। Then that's all right. तो ठीक है। But if we remain unhappy, लेकिन अगर हम दुखी बस बने रहना चाहते हैं then you can't stay here. तब आप यहाँ नहीं रह पाएंगे। This is meant for happy people. या खुश लोगों के लिए है। Prabhupada said you want to make the hippies into happies, right? बाद ने कहा उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। So Prabhupada said if you're doing devotional service nicely, you should become more and more happy. प्रभुपाद बताते हैं अगर आप भक्ति में सेवा अच्छे से कर रहे हैं तो आप और ज्यादा खुश होने लगेंगे। That's a good way to test. ये अच्छा तरीका है परीक्षा करने का। How much are we making Krishna happy? We can see how much more happy are we becoming. हम देख पाएंगे हम जितना कृष्णा को प्रसन्न कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हम प्रसन्न हो पा रहे हैं। All right, that's the test. यही परीक्षा है। Now they want you have to show COVID passport, right? अभी तो We have पासपोर्ट happiness passport. हमारा यहाँ हैप्पीनेस पासपोर्ट दिखाना होता है।
And you can't fool us. You can't get a fake one in India, you know. और आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते हैं, भारत में नकली नहीं बनवा सकते हो। We'll see if it's real. हम देखेंगे ये असल है या नहीं है। All right? ठीक है। Don't cheat the system. प्रक्रिया को ठगने का प्रयास मत कीजिए। Azerbaijan, there's a lot of corruption over there, isn't there? अज़रबैजान में बहुत भ्रष्टाचार होता है। It's not very pure, right? बहुत शुद्ध नहीं है वहाँ। Where in this world like perfect government? That's what I said. You're the Azerbaijan yogi. वो बता रहे हैं कोई भी जगत में कहाँ पे पूर्ण भ्रष्टाचार नहीं है, तो गुरुदेव बता रहे हैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप अज़रबैजान के योगी हैं। Because you're bringing the truth. क्योंकि आप सत्य लेकर आए हैं। You're saying, where is there no corruption in this material world? आप बता रहे हैं कि कहाँ इस भौतिक जगत में कोई भ्रष्टाचार कहाँ पे नहीं So है। you know perfectly well. आप पूर्ण तरीके से जानते हैं। You don't like corruption, right? आपको भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। You want the pure thing, right? वो शुद्ध चीज चाहिए। Is that what you're looking for? क्या आप उसके लिए ढूंढ रहे हैं? Corruption you can also use in Krishna consciousness. Acha! He's learning very quickly. प्रभु बता रहे हैं भ्रष्टाचार का भी कृष्ण भावना में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बता रहे हैं अच्छा आप बहुत जल्दी सीख रहे हैं तो। Then he understood everything can be used in Krishna's service. आप ये समझ पा रहे हैं सब कुछ कृष्णा के सेवा में लगाया जा सकता है। He's already expanding his understanding, you know. पहले इनका समझ बहुत ज्यादा फैल गया आपको। He's arguing from every side of the coin, you know. ये हर एक तरीके से बहस कर पा रहे हैं। Then you catch everything. सब कुछ पकड़ ले रहे हैं। Krishna says, I'll tell you everything of the material world and the spiritual world. Nothing will be left out. कृष्ण बताते हैं मैं आपको सब कुछ भौतिक जगत का बताऊंगा, सब कुछ आध्यात्मिक जगत का बताऊंगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। Right? ठीक है? Time will show. Every word out of his mouth is like some esoteric truth, isn't it? प्रभु बता रहे हैं समय बताएगा। गुरुदेव बता रहे हैं इनके मुंह से जो भी शब्द निकल रहा है ऐसा कोई अद्भुत सत्य जैसे बता रहे हैं। He cannot help himself. That's just the way he's thinking. ये खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से ये बस सोचते हैं। It's like one shloka after another. एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक बोल रहे हैं। Because he's been up since 2:30 this morning, you know what I mean? आज शायद दोपहर रात के 2 बजे से उठे हुए हैं। He had plenty of time to think up all of these things, you know? काफी समय था इन सब चीज के बारे में सोच रहे थे ये उठ के 2 बजे से। But he's going to sleep like a baby tonight, I promise you. लेकिन आज रात एक बच्चे की तरह सोएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। All right, thank you everyone, appreciate it. Shri Gauri ki, Srila Prabhupada ki, Srila Govinda Swami, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhakta-vrinda ki, Gaura Premanande. Hare Krishna. Prabhupada, Gurudev. All right, we made some progress. कुछ उन्नति कर पा रहे हैं। If I can convince him, I can convince anybody. I like a good challenge. मुझे चुनौती बहुत पसंद है। It gets more interesting if you have a good challenge, right? बहुत रुचिकर हो जाता है जब आपको सामने से चुनौती अच्छी मिलती है। All right, everyone feeling a little better? सब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। Have a good rest tonight. अच्छे से We'll see you tomorrow. हम आपसे कल मिलेंगे। Every day, a little better, more and more happy. थोड़ा बेहतर होगा और ज़्यादा सुख होते जाएंगे। Is he setting his alarm? अपना अलार्म लगा रहे हैं। Sleep till 3 o'clock, all right? Then you'll stay awake for my class tomorrow night, all right? 3 बजे तक सोइए आज तो कल आप मेरे क्लास के लिए जगह रहेंगे। Put in an extra 30 minutes, all right? 30 मिनट और थोड़ा ज़्यादा सोइए। Here's another garlic for you, man. All right? Hare Krishna. There you go. Azerbaijan. The yogi from Azerbaijan. Azerbaijan के योग से Azerbaijan.
Maharaja, извините, мне на WhatsApp прислали текст про санскрит, как мировые ученые ценят. He has one very important information about Sanskrit in Russian language, some explanation. He will send it to Потому что me. я его не смог Give me the essence. What's the essence? Какая вот суть, расскажите, вот вы прочитали же, какая суть? You want to read it? It's like long. What's the essence? Какая Why is суть? this important to you? Суть. Почему это для вас важно? Вот вы говорите, это важно. What does that mean to you? Что это вот значит для вас? Для меня это значит, что они санскрит, самый язык, принимают как научно обоснованный. Это ученые? Да, и как нумерология, как он тоже обоснован. В смысле, каждая буква, каждая цифра соответствует, и какие кодировки, какие алгоритмы дают. И изучение самого чистого санскрита обогащает самого человека. Смысл в этом. So the essence is like scientists from like all over the world, they admit that Sanskrit is like very scientific and it's very beneficial. Like if you read him, Krishna is the source of all knowledge and intelligence. Кришна, он является источником всего разума, всего If you take знания. all of the scientists of the world, that intelligence is coming from Krishna. Если взять всех ученых этого мира, их разум приходит от Кришны. So his language, this is also from transcendental world. Его язык – это из трансцендентного мира. Естественно. So it's topmost language, Это высочайший язык, completely spiritual, полностью духовный. not materialistic. Он не материалистичный. And all other languages are coming from И Sanskrit. все другие языки выходят из санскрита. Absolutely. Абсолютно. But to understand Krishna and his language and what he's trying to say, that's not so easy thing. Но чтобы понять Кришну, его язык и что он хочет объяснить, это не такая легкая вещь. Krishna says, if you come in the mood of bhakti, devotional service, then I'll explain everything to you. Кришна говорит, что если ты придешь ко мне в настроении любовной преданности, тогда я объясню все тебе. If you come by karma or jnana or yoga, if you have some other desire, then Krishna says, I'll hide myself from Но you. если ты придешь с кармой, гьяной или йогой или другими желаниями, то Кришна говорит, я буду держать себя сокрытым от So тебя. problem with the scholarship is everybody gets puffed up. Проблема с ученостью – это то, что все становятся гордыми. So it creates a pride. Это создает гордость. Махарадж, я не отвергаю никакие лекции и не путь Прабхупады, не отвергаю. Это не означает, что я должен отказаться от чистых книг. Это должен Что такое чистые книги? Без искажений все взял. Чистый санскрит, что ли? Да. I'm not against like lectures and Srila Prabhupada's how he did, but I'm for like pure books basically in Sanskrit language. But if you don't have mercy from Krishna and Krishna's pure devotees who are from Krishna Loka, then how, without their mercy, will you understand the Sanskrit Но properly? если вы не получите милость Кришны и милость Его преданных, которые из духовного мира, как вы сможете понять санскрит должным образом? Я беру сейчас, хочу заниматься терминологией, просто терминологию взять и написать. То есть остается философией, понимаете? Как словарь сделали. Да. I just want to make like word-to-word like translation. But there's people who have exactly word-to-word translation and do not understand the Bhagavad Gita. Есть люди, которые сделали такой прямо перевод, слово в слово, ученые, но они вообще не поняли. They come with the opposite of Они understanding. пришли с пониманием прямо So you противоположным. cannot understand by word-for-word Поэтому вы не translation. сможете понять через перевод слова в слово. Книги остаются книгами, есть шлухи, есть транскрипты, есть переводы, есть как произносятся эти слова, да, на санскрите. Даже можно делать партитуру правильной мелодичностью, чтобы, если ты искажаешь интонации, мелодичность, тоже смысл меняется. Санскрит очень тонкий. Yeah, he's bringing the same point that word-to-word translation without any like deviation, because if anything will be changed, the meaning will be changed. But without mercy of Krishna, you cannot properly understand
what that word actually means from an academic point of view. Без милости Кришны вы на самом деле не будете способны понять, что вот это слово означает с академической точки зрения. Я не отвергаю философию, я не отвергаю лекции. Я остаюсь философией. Что? Здесь написано санскрит, есть еще перевод, правильно? Я вижу эту книгу, Прабхупада книги, а то, что там санскритские термины, как они произносятся в транскрипции, чисто на азербайджанский язык перевести. Это фонетические базы. Понимаете, тут нет никакой философии. He says that I agree, like I'm not against philosophy. Philosophy is a philosophy, but I basically he want to make like a vocabulary, Sanskrit word, Azerbaijani word. Просто фонетику, да, взять положить. Just like from like grammar, something like that. From a grammatical point of view. Это же лингвистика. Yeah, he's bringing like grammar, different grammar points. But how will you understand the meaning of the word if it's transcendental? А как вы сможете понять значение самого слова, если оно трансцендентное? Прабхупада дал значение. Prabhupada explains the meaning. But Prabhupada, many times you're not giving exact word for the Sanskrit word. Но Прабхупада во многих местах не переводит слово в слово But he's санскрита. giving the meaning of what it means. Но он объясняет смысл, значение этого слова. Это не отвергаю. I agree. So many people doing word for word translation of Sanskrit, they're finding fault with Srila Prabhupada, who's Krishna Premi Bhakta, right? So what is the value of their so-called grammatical understanding if they're finding fault with Prabhupada explaining what it actually means, not perfect word for word Подожди, сейчас translation? я переведу. Многие люди, которые ученые, да, и они делают вот как вы хотите, да, вот этот перевод слова в слово. Я не переводом занимаюсь, я фонетически. Ну, фонетически. Не, это разное. Ну, хорошо, давайте. Не, постой. Вот. Wait, I listened to, wait a second. Listen. No. I listened to what you said, No. right? Now I'm trying to make a point. Поймите, я беру санскритское слово фонетику. Фонетика Шива, знаешь, что это? What is it? А можете объяснить тогда еще? Фонетика, понимаешь? Вот есть буквы, есть звуки, понимаете? Вот как они звучат, я беру эти транскрипции и переписываю на азербайджанский алфавит. Не через английский, не через русский алфавит. Буква остается буквами. И база остается азербайджанской базой, скорректирована на санскритскую основу. Все. Вот это здесь нету перевода. Фонетика это звучание слова в этом языке, понимаете? He's saying, я понял. Ну когда как в скобочках, как это звучит. Да. Как звучит, просто звучание He's есть. saying that I want to translate like word and then it's how it's pronounced this word properly. Like this thing he want to make, like how to pronounce the Sanskrit word properly with the different sounds. Like this part he want to. Is that your devotional? Is that his devotional service to Я Krishna? перевел, что это фонетика, да? И Гурудев он спрашивает, а это является вашим преданным служением Кришне? Is Krishna telling you to do like that? Это Кришна говорит вам этим заниматься? Есть необходимость в этих книгах. There is necessity. No, but has Krishna directly told you to do like that? Кришна, он прямо вам сказал это делать. Have you received direct order from Krishna to do that particular seva? Вы получили наставление от Кришны прямо делать вот этот вид служения? Получил. I received. How Krishna told you? А как Кришна вам сказал? Из сердца. From my heart. But it has to be Guru Sadhu Shastra, Но это же должно быть гуру, саду и шастры. not just from the heart. Не только из сердца. The book says like that. Это в книгах говорится об этом. Все принципы переносения информации чисто и не искажая перенести информацию, не прибавляя и не убавляя. Правильно? Я этим хочу заниматься. Все. I want to give this message like without adding anything. This is what I want to do. And that looks like what you're going to do. Но и выглядит так, что вы как раз это и будете делать. You're very determined. Вы очень решительно настроены.
I was just trying to make sure that it would be spiritual and accepted by Krishna as devotional service. Я просто хочу позаботиться, чтобы это было духовным, и чтобы Кришна, он принял это от вас, как преданное служение Ему. Otherwise, there's many mundane, Sanskrit scholars out there who don't understand the meaning of the shastra, so that's like really useless, А иначе есть много санскритских ученых, которые на самом деле не понимают значения шастры, тогда это все является бессмысленной деятельностью. Most times they say opposite thing, they commit offense. И в большинстве случаев они вообще говорят прямо противоположные вещи, совершают оскорбления. Я переводом не занимаюсь, просто это техническая часть. I will not do any translation, it's just like some technical part. You're translating one word to the other, right? Вы же будете переводить одно слово на другое? Не перевести. Транскрипция. Это не перевод. Это звучание в буквах. It's only he will give how it will sound in letters. Like this word, Sanskrit word, how it will sound, he will put this letters. So you're not even going to explain what the word means in the other language? То есть вы даже не будете переводить, что означает слово. Просто как звучит и все. Да. Просто звучание. Перевода не будет слова. Нет. Only how it will sound. So how many people are going to just... Это база терминологии. Терминологическая база. How many people will read a book, not know what the word means, right, and just read the book just to pronounce a sound which they have no idea what the sound means? Как многие люди будут читать книгу, читая слово, и потом читая вот просто вот как оно звучит на азербайджанском языке без значения слова. Пойми меня, дорогой. Санскрит не каждый человек может читать, правильно? Они читают транскрипцию. Есть? А эти транскрипции мы взяли или с английского источника, или с русского источника. Понимаете? Эти английские и русские источники не дают тот колоритность. Значения не будет слова там, да? Значение дают, пропада дают. Значение остается So he's saying that not many people can pronounce Sanskrit word properly. So he want to, and if some English or Russian trying to pronounce this Sanskrit word, it sound not exact. So he want to make it in Azerbaijan's like sounds, how the Sanskrit word will sound in Azerbaijan. That sounds like your life's mission. Это звучит как миссия вашей жизни. To get everyone in Azerbaijan pronouncing Sanskrit words. Чтобы в Азербайджане все могли произносить санскритские слова правильно. Очень просто. Вы читаете на своем языке правильно, они читают тоже на своем языке. Читать на своем языке. Like we all reading in our language, these Sanskrit words, we reading them in our language. He wants to read in his language. You want to translate Prabhupada's books into your language? Вы хотите как перевести книги Шрилы Прабхупады? Не перевод, это не перевод. Как звучат, да? Да. Как санскрит звучит. Translation will be Srila Prabhupada's translation, but how this Sanskrit word pronunciation, he will put these sounds together. In Azerbaijan language? Yeah. Okay. Good luck. Хорошо. Удачи вам. Haribol. At least he's happy now. По крайней мере, вы счастливые теперь. Пока нет. Пока не чемпиона сделал. Not yet. I will become happy when I do it. You just keep coming every day. Продолжайте к нам приходить каждый день. Then by the time you go to do the work, at least you'll be happy doing it. И к моменту, когда вы уже приступите к труду, вы будете счастливы, делая. Вот видите, как мне